Hello, hello, hello. Welcome to another episode of Almighty Blues FC, a fan channel for all to see and buy. I think it was entire world, just sitting and watching last night जो हुआ 4-3 आपने देखा क्या बढ़िया मैच था. I know like a lot of mistakes, but as a neutral and there are three neutrals today on the panel, so that is something that हम discuss करेंगे. लेकिन the big night, especially for Liverpool and for Villarreal fans after a long time, is got to be the semi-final that they have Liverpool versus Villarreal. इसलिए हमें आना ही था. And for that, I have a very, very special panel. Of course, talk about Liverpool, the big game, and there have been a lot of big games. Like, come on, I had to call back Nitika from Indica. First one, Nitika, welcome back. कैसे हो? How are the nerves? I'm really, really excited, and I'm just excited these days that I'm happy. Interesting, interesting. और निधि, welcome back as well. क्या लग रहा है मतलब gut थैंक यू feel? सो मच यार। नर्व्स तो हमेशा रहेंगे यार। बिफोर एनी लिवरपूल गेम देयर विल बी नर्व्स, बट यू नो it's a great time यार। and, last season was very bad. We could not get anywhere in Europe or the league में तो चलो we finished third and all that, but now it's time to play another semi final, so really excited, result जो Yes, भी हो। yes. Yes, and I'm discuss करेंगे काफी क्योंकि yes, Una Emery, good evening. But by the way, yeah, I probably should have started like that. It is a good evening, I think, hopefully for Villarreal fans, but for Liverpool fans as well. Liverpool versus Real Madrid, interesting. Yes, absolutely good evening to everyone, and yes, as always, like कर दीजिए, check out the channels of Nitika and Nidhi. Of course, Manas आने वाले थे, but hopefully we'll have him next time. He's not in town. We'll have him for sure. But yes, big up to 8744. सो आई डोंट नो लाइक पहले ऑफ कोर्स लिवरपूल विलारियल के लिए बहुत बड़ा काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन चाहिए लेकिन वी हैव टू स्टार्ट विद दैट मैच बिकॉज दैट वाज अगेन मतलब वन इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री बुक्स एज वन ऑफ द सेमीफाइनल्स डिस्पाइट देयर मिस्टेक्स व्हाटएवर दैट एक्साइटमेंट वाज राइट देयर और मुझे पता है वी ऑल रिएक्टेड ऑन रेस्पेक्टिव चैनल्स लेकिन नितिका I have to ask you, like, do you think it's really Carlo Ancelotti's tactic to let the other team get advantage first and then hit back? Love, it's literally seeming like a tactic. Oh, come on, it cannot be lies, right? I don't think that it was a tactic, it's the nerves in the game like this. And I don't think that they ever came there to, not have an advantage. But then when they saw the way City started, having Mm-hmm. 11 minutes में दो goals, and then they thought, bhai, इसमें कुछ करना पड़ेगा. So that is why I feel that even they lost the match, but still they're happy. Why the Real Madrid fans are happy? I think just because of that, it just doesn't feel like a loss. Because the way Man City started, it seemed like भाई ये 5-0 6-0 ना end हो जाए game. That was something that can happen because it's City you are facing. But then the scoreline was 4-3. It's good enough, it's doable, and if there is anybody who can do it, it's Real Madrid. That is why I feel that it can't be the tactic, but definitely the way it ended can be the tactic, because it's Benzema who's like carrying the team. And also you can't deny the fact that they have pretty solid players who have a lot of experience in Champions League. So सब कुछ मैटर करता है यार एट द एंड. सो दैट वाज क्वाइट गुड. एज अ न्यूट्रल तो बहुत मजा आया भाई, देख के बहुत मजा आया. Yeah, I know, never give up. Maybe that is वो एक है मतलब again Villarreal fans in the house. भले यार एक चीज मानना पड़ेगा, including myself. I have to say, like, I respect the panel and of course Liverpool, of course, no offense. लेकिन I think apart from Liverpool, I think entire world आज Villarreal के साथ है. That is something that by now आपको पता लग गया होगा. But that is how it goes, right? And just the story of the underdog. तो निधि, हमको yeah. हमको आदत है इस चीज की। अरे talk, जैसे you're telling this to a Chelsea fan, imagine. हमको हमको आदत है इस चीज की। That's half the fun, right? But yes, sorry, you were asking something. नहीं नहीं एकदम एकदम I exactly understand. Himshikar is definitely saying hello to us. Yeah, thanks for joining everyone. And again, like the stream, लेकिन हाँ निधि quickly, you know about that Real Madrid game again, right? मतलब the fact that हाँ I understand Nitika ने बोला about the other team being so good, scoring एक पहले दो goals, was like wow, boom, just goals आ गया and they had to go on the back foot. लेकिन even against us, even against you guys last year, like वो एक tactic लग रहा है मतलब they kind of relied too much on Vinicius and Benzema. Obviously, they are the form players, and why won't they rely? लेकिन एक creativity element in midfield is missing, you would say, for Real Madrid, and that is something that will be their Achilles heel finally. Yeah, I don't think it's a strategy. No one will want to play with that strategy of giving an advantage to somebody, and then, especially with a team as dangerous as Manchester City, I don't think it's a strategy. But Mhm. yeah, Real का क्या है ना,
यूरोप में बहुत ही अलग टीम हो जाती है वो, कुछ भी मतलब दे हैव, it will be, they will put up something even when they went 2-0 down. I was speaking with some friends from who are Real Madrid supporters. I told them देखना अभी बेंजेमा गोल मारेगा, और वही हुआ. वो मतलब कुछ है रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग में. तो स्ट्रैटेजी तो मुझे नहीं लगता है, बट वही है कि मतलब इट इज गोइंग टू बी, जिस तरह से मैच एंड हुआ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सिटी काफी अच्छा खेली, एंड बट जिस तरह से मैच एंड हुआ, आई थिंक साइकोलॉजिकली एटलीस्ट रियल मैड्रिड इज टेकिंग द एडवांटेज टू मैड्रिड, इवन दो दे लॉस्ट द गेम. आई थिंक साइकोलॉजिकली दे आर टेकिंग द एडवांटेज. Yeah, psychological बोल सकते हो. And by the way, यार काफी questions आ रहे हैं, and we'll get to them. Obviously, once we kind of start the Liverpool Villareal conversation, हम वापस we'll come back to the questions. I am marking them for sure, हमेशा जैसे, right? लेकिन yes, I think मतलब ये question मैंने पूछा था अपने रिव्यू में, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिला. There's understatement, and I don't know why. आप बोलिए comment में, अगर आप लोग देखे मेरे रिव्यू आज, but एक question मैंने पूछा है. This is more about history, right? But just I think the UCL, most of us have watched it over years. Nitika, I would like to ask you, where would you put Benzema in history of UCL strikers ever? After what he's done, a season has been unreal, and not just this season, but generally, right? He has been there even in the stats. अभी तो मतलब तो really वो conversation आ गया time कि यार he's one of the best strikers ever in UCL, नहीं? I absolutely agree. And you have to put him right up with the finest of the strikers out there that we have seen in Champions League history. You know what? It's like I mentioned that in my video as well. The first goal that he scored after being 2-0 down, that wasn't an easy goal. That wasn't an easy goal at all. That wasn't like the chances that Man City was getting back there. Man City got the chances one on one with the keeper. And I'm not taking anything away from Man City here. See, they were very, very good. I'm just explaining that goal that Benzema scored was very difficult. The control on it, and just one touch, and that's it. So anything that he's touching is turning into gold, and you have to give him that, that one of the finest guys that he has become, the strikers that he has become. Because you see, against PSG, against Chelsea, talk about any team, he has been delivering. So it doesn't matter if the opponent is maybe one of the biggest clubs out there, or maybe somebody who's an underdog. It doesn't matter at all. He is delivering, and it's not just now. And just look at him anywhere, whenever they need Benzema, he's delivering. So I think that this is the right time. Even though I started the season by saying that I need Mohamed Salah, I'm going to start a पूरा एक वो बोलते नहीं है कि एक पूरा एक क्या बोलते हैं यार उसको, Agenda. क्या होते हैं, एजेंडा एजेंडा शुरू कर कैंपेन. दूंगी. हाँ हाँ, कैंपेन शुरू करने वाली हूँ कि मोहम्मद साला को हम बैलोन डोर के लिए कंसिडर करेंगे. बिकॉज आई यूज्ड टू डू दैट इन एवरी वीडियो, ताकि वो सबके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए. लेकिन you cannot take away Ballon d'Or from Benzema, because just look at the guy, what he's doing here, anything that he's doing. So seriously, I think that he's one of the finest ones that we are witnessing. Yeah, you think so? Fair enough. लेकिन yes, of कल course, का big जो up to Just Wila. कल का जो Nitika. मैच था ना अंकित, कल का जो हम्म. मैच था ना, अभी कुछ दिन पहले KGF 3 जैसे रिलीज हुई थी ना, फुल हाँ धूमधाम. हाँ. कल का मैच फुटबॉल का KGF था, मतलब धमाधम एक्शन था अच्छा, कल के मैच में. अब मुझे पता चला क्यों मुझे हेट मिल रहा है, क्योंकि मैंने लाइव बोला था मैंने केजीएफ नहीं देखा अभी तक. अरे फाइनली पता चला भाई, आई एम नॉट अ केजीएफ फैन. मैं वापस से बोलता हूँ, बिग डील मैन. मतलब क्या इसमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर कल रही क्या का मुझे? मैच फुटबॉल का KGF था भाई, फुल धमाधम एक्शन था. यार साडियो माने पूछ रहे भाई क्या मुझे मिलेगा बैलन डोर. मतलब एक्चुअली मतलब अफकॉन भाई, मतलब ही हैज रन इट. निधि, वुड यू एक्चुअली गो विद दैट? इमेजिन इफ ही यार देखो, he does a madness in the यार finals. अंकित, सी पर्सनली आई फील बैलोन डोर, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट थिंक हम बैलोन बात डोर, की है इसके बारे में. मतलब आई डोंट मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता एज अ फैन कौन बैलोन डोर जीत रहा है. ऑब्वियसली इफ अ लिवरपूल प्लेयर विंस द बैलोन डोर, देन इट्स ग्रेट, बिकॉज ऐसा होगा कि लिवरपूल आके आप बैलोन डोर जीत सकते हो, क्योंकि हमारे पूरे हिस्ट्री में सिर्फ एक प्लेयर ने जीता है बैलोन डोर, है ना. तो वो प्लेयर के लिए ग्रेट है, बट अगर आप मुझे चूज करने बोलोगे कि अगर मैं लीग कप ट्रॉफी यूज कर लूं या साला के लिए बैलोन डोर चूज कर लूं, मैं तो लीग कप ट्रॉफी चूज करूंगा टीम के लिए. वो मेरा obviously. ओपिनियन है. आई फील दैट इट्स अ वेरी मतलब वो आई पर्सनली पुट गोल्डन बूट्स अबव बैलोन डोर्स, बिकॉज
golden boots are not won with votes, but again, that is my personal opinion. Fair enough. But अभी ये बहुत डिपेंड करता है कि मैच ये सीजन कैसे एंड होता है. अगर रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत जाती है, ला लीगा जीत जाती है, तो बेंजेमा हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेक, राइट. लेवेंडोस्की का हो सकता था, इफ मतलब इस सीजन पता नहीं, मतलब मैंने उतना जर्मन लीग फॉलो नहीं किया है, बट अगर लिवरपूल विंस अ बिग ट्रॉफी, लेट्स से द प्रीमियर लीग और द चैंपियंस लीग और समथिंग, एंड देन व्हाई शुड सादियो माने नॉट बी इन कंसिडरेशन, राइट? बिकॉज he's got the AFCON for Senegal. तो मतलब बट अगेन They are in World Cup qualifiers as well, so they हाँ, qualified मतलब for अब that मैं उसकी too. पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब Yeah. that's my answer. वो You know my पॉलिटिक्स में answer. घुस गए You हम know. ऑलरेडी घुस गए निधि हाँ. अनफॉर्चुनेटली. बट यहाँ I'll tell पर you something. I yeah, actually feel कि I'll just interrupt here. मेरे को भी ना हमेशा no ऐसा ही problem. लगता है कि I'm not interested in Ballon d'Or or something. यार क्या ही फर्क पड़ता है? At the end, you need to see what the club is doing because that's more important, right? Because we are at the end the fan of clubs. ठीक है, we love players and all and playing in it. We respect them, but पहले तो ऊपर क्लब ही आता है. बट यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं मैं ना फिर वो कंगना रनौत टाइप से जाती हूँ क्योंकि शी इज अगेंस्ट फिल्म, फिर हमेशा नेपोटिज्म ये सब मिलता है, ठीक है. लेकिन फिर मन भी होता है सबका अरे कि यार नहीं मेरा भी नितिका, नॉमिनेशन आया, आई कुछ शुड अरे गो एंड कुछ पुश वी इट. आर इन द सेम बोट. किसी के भी जैसे हो जाओ, उसकी जैसे मत हो भाई. नहीं 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 मतलब वही हो Okay, you जाता है heard it दो right. दो दो. ये ब्रेकिंग न्यूज पीपल, ब्रेकिंग न्यूज. वी डू हैव कंगना रनौत यूट्यूब कम्युनिटी एंड दैट इज नितिका. मतलब वो खुद ने बोला है. कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट. लेकिन बिग अप यार, लेस्टर टू लाइट टीवी, बिग रेस्पेक्ट टू देम. Chris, he does great work. I don't usually shout out much, but this channel deserves a lot more love. Leicester to Light TV, trust me, one of the best favorite channels that I like, and I'm not even a Leicester fan. So imagine. And again, he does host a quiz show that is a fantastic quiz show among a lot of other shows. और ब्रैक करने का मौका है. आई बिलीव आई एम स्टिल टॉप ऑफ द लीग ऑफ दैट क्विज, जस्ट सेइंग दैट, राइट? बट या, कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन क्विकली टू एंड दैट रियल मैड्रिड कन्वर्सेशन. निधि, what do you think? I know हम सेकंड लेग के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, लेकिन what is your gut feel? Real Madrid advantage and who will be the difference maker in that second semi? यार मतलब मैं सच बताऊं, दिस कैन गो ईदर वे. वी ऑल नो हाउ गुड मैनचेस्टर सिटी आर, राइट. कल भी लगा था, कल वो थोड़ा अनलकी रहे, उनके फिनिशेस वगैरह नहीं हुए. वो यू नो मारेस का जो मिस था और फोर्डन ने जो फिनिश नहीं किया, वो इजिली 4-5 हो सकता था. तो व्हाट इज द गारंटी दैट सेकंड लेग में ऑल दोज विल, इफ दे ऑल स्टिक देन द टाई इज ओवर. बट ये चैंपियंस लीग है, इट इज द होम ऑफ ड्रामा. तो यू डोंट नो, बट आई फील दैट मैड्रिड टेक द एडवांटेज बिकॉज साइकोलॉजिकली वो लोग थोड़ा ऊपर हैं, मुझे ऐसा लगता है. Okay, fair enough. और Nitika, your call, just saying कि who will be the difference maker, who will get that winner come the second leg. कुछ तो ड्रामा होने वाला है second leg में for sure, right? अगेन अगर कल जैसा मैच देखा है एज अ न्यूट्रल, I was having this discussion with Nidhi only during the match and I said, you know what Nidhi, when I think of it कि मेरे को मैन सिटी नहीं फेस करना है, जब मैं मैन सिटी के बारे में, लेकिन जब मैं मैड्रिड का सोचती हूँ मुझे मैड्रिड भी नहीं फेस करना है. मतलब इट्स स्कैरी because anything can happen in a fixture like this and that's the beauty of it. That is why we saw like a 7-goal thriller. That's why it was so good to see what is happening, but then you have to give it to Man City in some way because Cancelo suspended था, Kyle Walker नहीं था, तो they had to go with Fernandinho and we know what Vinicius Junior did there with him, as soon as he came. Though Fernandinho had an assist, तो हमको Yeah. लगा कि यार नहीं अभी गेम हैंडल में है, but still it's not going to be easy. Let's see अगर तब तक I don't know क्या Kyle Walker आ जाएगा तब तक I don't know, but Cancelo will surely be there in the second leg. Hopefully अगर कुछ प्रीमियर लीग में अभी कुछ नहीं होता है तो we are yet to see because having Cancelo and not having Cancelo in the team एक बहुत बड़ा loss है for Manchester City. So you can't just take away one of the best players they have and has been in very good form. So let's see if having him will impact it or not, but I hope that, मतलब मैं क्यों होप कर रही हूँ, बट पेप गार्डियोला अगर ओवरथिंकिंग नहीं करता है, जो होता है तो देखा जाएगा, बट एज मुझे अ क्या न्यूट्रल लगता है बी ना, वेरी. yeah, as in, and that's the thing, right? As a neutral, because of the fact that I'm kind of looking at both the angles. मुझे लगता है in a strange way Pep Guardiola will probably do what he did against Atletico in that second leg, and that's something जो सीखी है City over the last couple of seasons. And I have a gut feel that you might be surprised with that, and he does things differently, what people don't expect, and that's the only reason, right? But again, moving on. Yes, a lot of, I'm assuming, Liverpool kind of fan base in the chat. अगर है तो attendance दीजिए आप Liverpool fans,
And it'll be interesting how many people want Villarreal. And yes, मैंने एक poll भी डाला है, and I can see a lot of people have taken the poll, लेकिन likes नहीं आए. क्या हुआ भाई? मतलब सब लोग just hit the like button, certainly helps. Let's get the like target to 100. Let's reach there. But certainly talking about this game now, what first time ever I think Liverpool partly the semi-finals of Champions League, FA Cup, and EFL Cup in one single season. So Nidhi, अभी कुछ भी हो जाए, you told it on your podcast. I remember, like it's already been a good season. But how would you rate the season compared to, like, where would you rate the season in general? Because you are in what almost May and you are still in the reckoning for a quadruple technically. यार इसका आंसर थोड़ा ना मैं मतलब कोई सुनेगा, मतलब इसका थोड़ा आंसर फिलोसॉफिकल हो सकता है, साउंड करेगा यार. देखो, Go for it. trophies are the ultimate in football, and it's absolutely it should be the aim of any football club that plays football. बट मुझे लगता है ना कि अगर आप सिर्फ ट्रॉफी पे फोकस करते रहोगे ना, तो आप पूरे सीजन में एक बार खुश होते हो, है ना, एंड या तो नहीं होते हो. ठीक है. आई थिंक दैट यार दिस हैज बीन एन अमेजिंग सीजन. अभी मतलब आई विश यार, राइट. सो अभी ये सीजन कैसे खत्म होता है उस पर बहुत डिपेंड करता है. ऑब्वियसली आई विल बी हार्ट ब्रोकन अगर यहाँ से हम कुछ नहीं जीते और सिर्फ लीग कप पे रह गए, which is a possibility, which is a real possibility, right? Yeah, like we were But heartbroken. right, we will be. I'll be, and I think every Liverpool fan will be very heartbroken because इतना अच्छा खेल के you don't have anything to show for it. Correct. But I think this season has been absolutely amazing, with the way the mood was around the club during the summer, जब ज़्यादा सिर्फ कोनाटे लिया था हमने, and जैसे last season end हुआ था, and there was talk about everything. So this season is already special. I just hope we can end this with having something to show for it. Quadruple वगैरह मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ यार, मतलब वो सोच के ना मतलब दिमाग खराब हो जाएगा. 9 games to go. Let's just give it our all. That's all I'll say. I know it sounds philosophical, but that's how I deal with क्योंकि अगर मैं quadruple सोचता रहूंगा ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. नहीं, ये हिमशिखर ने बोला ना, मॉन्क फिलोसोफर ना हो, ऐसा हो सकता है कि निधि भाई, कम ऑन, लाइक इट हैज टू बी पार्ट ऑफ इट. वो है, मतलब दैट इज द कैरेक्टर दैट यू आर इनटू, सो कम ऑन, दैट्स अ फैक्ट. लाइक एंड विल टेक दैट इमीडिएटली. आई लव दैट फैक्ट. लेकिन विलारियल बाय द वे, नितिका, दे आर ऑन अ 3-game winning streak. वो ला लीगा में अच्छा नहीं कर रहे थे. लास्ट 2 back-to-back games they have won, and of course we watched how they beat Juventus. Wow, they have arrived. और Bayern Munich सेकेंड लेग में भी मुझे याद है, मैं मार्कोनी से बात करता हूँ वॉच अलॉन्ग में, एंड ही एक्चुअली काइंड ऑफ सेड दैट विलारियल जीती तो ही विल काइंड ऑफ शेव ऑफ, एंड ही डिड दैट. बट दैट इज द थिंग, वी नो वन एक्सपेक्टेड. सेकेंड लेग में इट केम डाउन टू, एंड दे काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर रखते हैं, दैट्स व्हाट दे डू. बट डू यू एक्चुअली would say that they have underachieved in La Liga as an overall season? They are 7th, I think, abhi, or would you say they have overachieved just with going with the squad? I think I'll pick neither, to be honest, because I think that leagues are completely different. If you have to showcase what you're doing in leagues, because in leagues because you have to play every match at 38-39 games खेलने होते हैं, and it's very difficult कि तुम हर game जीत जाओ. Liverpool has lost like 2 games अभी तक. तो मैं सोचती हूँ यार नहीं अभी सारे games जीतने हैं, but यार सोचो मेंटली इट्स सो एग्जॉस्टिंग. पहले तुम वो 38 गेम्स जीतो, फिर तुम डोमेस्टिक कप्स में जीतो, फिर तुम जाके चैंपियंस लीग में भी जीतो, तो इट्स टू मच. दैट इज व्हाई आई फील दैट whatever Villarreal did in league and whatever they are doing in European competition, it's neither they are underachieving or overachieving. This is how they play, but the mentality that is required to play in a European competition, it's different. It's completely different, and that's what Unai Emery has done. Because you see, I know that it's not Champions League, Europa League में काफी experience रहा है, और अभी ये टीम जीत के आया है Villarreal, तो they know how to win together. That's what I mean, that Unai Emery knows how to take this team to some other level. And जब तुम European competitions की बात करते हो ना, तुम उनको बोलते हो भाई 1 गेम है, भाई 2 गेम है, तब आगे जाएंगे तो देखेंगे. But when you're talking about a league, you have to go till the end, and you don't need that explanation from anybody. So एक अलग फैक्टर आता है यार when you're playing in, तभी तो हम इतने अंडरडॉग टीम्स क्या क्या कर जाते हैं, which is why that Leicester story was brilliant.
क्योंकि वो Brilliant. Yeah. लीग जीते थे, वो लीग जीते थे, एंड व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू डू Unreal, दैट मैन. unreal. वो unreal feeling आती है ना throughout the as in football kind of family, right? Simply put, and that's what like एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. इसलिए हम बोलते हैं ना 2012 में Barca fans kind of remind us about 2009, we remind them about 2012, and that is the whole thing. When you don't expect against the wall kind of situation, you still kind of do it, and we have been on the bad side, you've been on the bad side, we've been on the good side, post goal and all that. मतलब again, not going there, but just kind of saying, a lot of kind of stories are there in football apart from जो आप expect नहीं करते हो, right? But लेकिन निधि यहाँ और पर एक यार क्वेश्चन था. या हाँ, और यार लोग मतलब ऐसे बोलते हैं, मतलब आई जस्ट टेक 2 minutes. People say प्लीज Liverpool will bottle the quadruple. That statement is quite ironic in its आउट ऑफ सिलेबस है भाई, वो स्टेटमेंट ही है मतलब आउट it's ऑफ very सिलेबस. ironic in its construction, because you can't you bottle someone. एक तो bottling, I mean, छोड़ो, मैं ग्रामर में नहीं घुसूंगा, लेकिन how do you bottle someone that you don't have yet, right? So bottling का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. Okay, मतलब हाँ, मतलब I have to agree with that because of the fact that मतलब who expected, मतलब इतना easy बोलते हैं treble quadruple. Last season I remember, वही hate की बात कर रहे हैं ना, I remember Man City quadruple चल रहा था, मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जब Chelsea kind of stopped that run, और that is the fact. It's very easy मतलब बोलने के लिए कि you're expecting a quadruple. How many times does it happen in English football? Please tell me, कोई बताओ मुझे तो याद ही नहीं है कभी हुआ है. Treble is the one I remember. Manchester United का the big treble I'm talking about. Again, you can always count the trophies like the charity sheet and all those things, which I don't as an old school person. But again, You should not, yeah. exactly. But Nidhi, यहाँ पर एक बहुत ही interesting question आया था from one of the guys. I think I started, and that was about Sushant पूछ रहे हैं, do you prefer Real Madrid or City in final against Liverpool? I don't prefer either of these teams. They are incredibly tough teams to play against. बट यार कितना सिटी कितना हो गया. पहला तो हमको फाइनल, आई मीन इसमें लिखा हुआ है कि फाइनल में पहला तो वी हैव टू रीच द फाइनल्स, राइट? We want this is a team that is going to make it very very tough for anybody who plays them. They have बारसा बोल रहा हूँ, बायर्न और यूवेंटस को हरा के आए हैं ये लोग यहाँ पे, ठीक है? तो इनको हल्के में तो पहले तो हमको पहुंचना होगा. पहुंच गए तो वो बहुत, मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर अचीवमेंट टू रीच द चैंपियंस लीग फाइनल. हु डू आई प्रेफर? फॉर द सेक ऑफ माई हार्ट आई वुड से रियल मैड्रिड, बिकॉज सिटी के साथ यार कितना, मतलब प्रीमियर लीग में, FA कप में अभी मतलब ये भी होते होते रह गया, अपना FA कप फाइनल भी होते होते रह गया. तो बट अगेन देयर इज नो प्रेफरेंस एज सच यार. कोई नहीं, हम लोग आए वहां तो हम बात करेंगे. दैट इज समथिंग दैट इज लॉन्ग टाइम पेंडिंग. वो एक रिवेंज, मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट रिवेंज. आई हैव नो कॉज ऑफ सेइंग दैट इज प्रॉपर रिवेंज वाला मैच होने वाला है, लेकिन मजा आएगा. मतलब दैट्स व्हाट आई वुड से, दैट्स व्हाई वी लव इट. द बैंटर इज ऑलवेज देयर एज लॉन्ग एज इट्स इन कंट्रोल. एंड यहाँ पर अगेन आई थिंक निशांत एक इंटर फैन है इन द हाउस, एंड ही रिमाइंड्स अस सेइंग दैट इंटर डिड बीट लिवरपूल, वन ऑफ द वेरी फ्यू टीम्स हु डन दैट इन रीसेंट टाइम्स. Or I'll put that on Nitika, because Nitika, like again, at home losing to Inter and kind of drawing Benfica, when I know the leg was already kind of settled almost, आप बोल सकते हो, लेकिन फिर भी to some extent वो थोड़ा worry है, because at Anfield you have lost twice in recent times, which is your fortress in the Champions League. So is that something that आप बोलोगे यार Liverpool just took off the pedal in those games, or tactically there's something at home that is wrong? I'm going to quote Klopp here, that you should know which battles to lose, and these were the battles that we could afford to lose, because you know what, like I mentioned before, we have such tight fixtures because we are in contention of every trophy that there is. How can we expect that we will go and win everything out there? We want that to happen obviously, but कहीं ना कहीं यार तुम expect करो, वो players है, international भी खेलते हैं, then हर अभी जैसे कि क्वाड्रुपल के लिए वो भी कंटेंशन में, दे आर प्लेइंग इन एवरी गेम दैट देयर इज. सो अगर कोई गेम्स हम हार सकते हैं, वी कैन अफोर्ड टू लूज 1 or 2, जानबूझ के नहीं हार रहे हैं, बट कुछ मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, उसकी वजह से वी हैव लॉस्ट, तो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिका, तो हमारा पिछला लाइन पूरा डिफेंसिव लाइन था ही नहीं, एंड हम दूसरों प्लेयर्स को भी चांस दे रहे. देयर इज जो गोमेज हु वाज प्लेइंग, देयर वाज कोनाटे, माटिप, एंड देन देयर वाज सिमिकस. तो एक प्रॉपर स्टेबल वाला लाइन था नहीं. अगर वहां वेंडाइक होता, मे बी वो इतना बोलता भी नहीं कि भाई लेट्स टेक कंट्रोल ऑफ दैट एंड लेट्स, दिस शुड नॉट हैपन.
but everybody has to play. They need to get rest as well so that they can go ahead and win other matches. तो ठीक है, home पे हारे हैं, I know that, because I remember when I was doing the previews of this on my channel, so people were like, you're worrying too much. मेरे को हमेशा लोगों ने, लिवरपूल फैंस ऑब्वियसली, तो दे वर लाइक यार तू कितना डराती है ये सब. मैंने नहीं, बोला इट्स नॉट अबाउट दैट. pessimistic है नितिका, that I will agree. She is pessimistic when it comes to her opinion. लेकिन I get that from where you're coming, that part of it आपको, you have to be knowing your opposition, और पता लगना चाहिए about timing, about where, it's really Exactly. important to peak. You have peaked at the right time. You can probably argue that, right? So And- Peter Kravitz, who's one of our coaches, he said a very amazing thing that for a football team, you should know the art of losing the right games. So अभी तक जो हुआ है उसके हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि obviously losing against, हारना कभी अच्छा नहीं लगता है, but losing against Inter was like that one thing that got out of the system, losing a game, right? So that is one very amazing thing that Peter Kravitz said after that particular result. So Great. हर मैच तो नहीं जीत सकते ना यार, ये humanly impossible है. Exactly. And that's something that as football fans, वो expectations kind of become more and more जैसे टीम अच्छा करते जाती है. That's something that as fans we need to also learn. लेकिन यार यहाँ पर by the way मैं again देख रहा हूँ, a lot of people are there in the chat. अगर आप डर रहे हो यार ये चेल्सी फैन बॉय है, यहाँ पर काफी हेट मिलेगा फॉर लिवरपूल, फॉर रियल मैड्रिड, जिनकी बातें कर रहे थे हम. नहीं, ऐसा नहीं है. आप कंटेंट देखिए यहाँ पर, you will not be as in regretting at all, I can assure you. Lot of Chelsea fans also have started hitting on me, thinking yeah, I am kind of giving others space. Lekin that's a fact. Like, it is a fan channel for all to see. So don't hesitate pressing that like button and the subscribe button, and to check out Indie Cop and of course Venice in the Monk. By chance आपने नहीं किया है, the links are always in the description. It is a drill now. So let's get in there, and thank you all the mods for helping me out there. Let's get the likes over 100. But again, coming to Liverpool, as in probably the man, the myth, the legend, I don't know, Nitika, Origi. The legend Origi, he did it. Bhai, but again at what it was, Everton, right? In that kind of situation, getting that second goal. Now, considering, I think it's the April schedule. It's been very hectic. It's the 8th game, if I'm not wrong, for Liverpool. So it's only fair to rely on Origi again. So are you in that boat saying that put Origi against Villareal? Just unveil what we have. We'll put him. If we can't get a goal, we'll put him. I'll tell you something. The faith matters a lot. As soon as Klopp made the substitutes, because I'm telling you, Ankit, I'm telling you, that was the worst 45 minutes of my life that I experienced watching that Everton game. I was so furious. मेरा मन था मैं क्या करूं? I was just furious. लड़ाई हो रही थी And proper. oh man, I'm telling you, मेरे से ना handle, I'm a very vocal fan, and मैं यहाँ पे अगर कोई साथ देख रहा हो ना तो मैं उसको बोलूंगी कि ये क्या किया क्या. And I was alone watching it, and I'm like, man, I'm hating this 45 minutes of the match. Then Klopp makes a substitution, and I'm telling you, this time पहले मैं क्लॉप के बारे में ऐसा बोल क्या कर रहे हो क्लॉप, मतलब सब्स्टिट्यूट करो, ये करो वो करो, आई एम ऑल इन. तो जब क्लॉप ने सब्स्टिट्यूट किया, जैसे ओरिगी आया, आई एम टेलिंग यू देयर वाज अ चेंज इन एटमॉस्फेयर. वो इसलिए बिकॉज द एनफील्ड बिलीव्स इन हिम, दे नो ही इज गोइंग टू गेट अ गोल. आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, अगर हम फिलोसफिकली बात करें, कुछ भी बात करें, बट समथिंग हैपेंस, समथिंग शिफ्ट्स, द एनर्जी शिफ्ट्स, एंड ओरिगी इज देयर एंड ही विल स्कोर अगेंस्ट एवर्टन. सो दैट्स व्हाई if we need him now in Champions League maybe, and मेरे को लग नहीं रहा था ओरिगी करेगा, पता, क्योंकि इतने टाइम से नहीं खेला है, आते ही गोल कैसे कर देगा. कहीं ना कहीं तो हम थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, but he will do that, and that's faith. And if we need that today, I'm sure that we can bring Origi in, and he can get that for us. But still, before that, I can rely on the players that we already have. Maybe we can do that, and low block को अगर किल करना है, देखना पड़ेगा. नितिका उसने ये सीजन ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल मारा है already. I'm not talking about the Everton goal. He scored against Wolves. 19. So are you trying to say Nidhi is done? He's done for the year? No. Sorry. यार ओरिगी तो यार देखो, obviously हम थोड़ा मजाक में बोलते हैं, but यार देख, honestly ओरिगी ना, it's more of a He's meme. a vibe. It's more of a meme amongst most people. But yeah, you look at Origi, he scored very important goals. He is capable of producing the extraordinary. उसने scorpion kick वगैरह मारा हुआ है भाई, मतलब वो कर सकता है. The thing is, he suffered a very bad injury against Funes Mori,
And before that, Origi used to be extremely pacey. Ankit, if you remember, when Origi signed 2014 में World Cup हुआ था, Origi was for Belgium getting chances in certain games ahead of Lukaku, and that was True. Lukaku का absolute peak. तो ओरिगी Yeah. का थोड़ा बैड लक रहा है इंजरीज के साथ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वर्ल्ड क्लास है या बहुत अमेजिंग प्लेयर है, बट ही इज अ लॉट बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ही इज. Fair enough. That's a great call because हाँ मतलब again we had one एक Belgian striker Batshuayi ना मतलब वही है they have the skill the technique. I remember एक goal मतलब not comparing her but it's something about them like जो X factor है मतलब I remember that goal against Manchester United he scored Batshuayi and Origi had such moments a lot where you can see the class, you can see the skill. It's just the fact that वो consistently maybe because of the the injury issues or whatnot or just the luck factor, just the squad that up you have a squad now. Let's be honest, Liverpool have a very good squad. That's why I'm putting this question to the chat as well. Chat, whom would you start as front three for Liverpool? Let me know, of course. Ankit sir, please do talk about Serie A often. हाँ यार, once absolutely. I think I'm kind of holding that flag when it comes to Serie A. I'm kind of wishing also my fellow content creators कि Serie A के बारे में ज़्यादा बात करो. मैं actually Serie A fan भी हूँ. Yes, once absolutely. And again, any content creators who want to kind of join me, I will maybe start a series for Serie A as well. मैं करूँगा यार और करूँगा मैं करता भी हूँ often. Do check it out once. हम करते हैं Serie A. And I really genuinely like it, right? I will play second team and let Villareal go through if I was flopped. यार देख ये तो मतलब हद ही हो गया but absolutely come on like you are a mod bhai come on लेकिन good banter. Having said that I think last weekend जो था Everton के साथ great win Liverpool के लिए. I have to say that yeah मतलब maybe you would expect they would beat Everton which they have been doing over recent times. Like Nitika said, it was a proper battle. Whereas Villarreal in Spanish league I think was probably they had an off last weekend, right? So will it really affect Nidhi when it comes to the team selection and things like that? Because Liverpool अभी भी proper title race में है, which we'll talk about as well. यार so just so that I understand your question, you are saying that Everton के मैच का इफेक्ट इस पे पड़ेगा या नहीं? हाँ मतलब वही है इतना मतलब they would have given too much into that match, right? We have some players had to dig really deep. Robertson was one of them. So obviously this will have an effect. But I also think that the Everton game was a good warm up for this game because Villarreal, although Everton तो मैं बोलूँगा कि वो फुटबॉल खेलने नहीं आए थे, but Villarreal will defend very well, right? It can be a good thing, but see एक चीज मैं बोलूंगा उनाई एमरी को ना थोड़ा मतलब आई फील उसको थोड़ी इज्जत ज्यादा मिलनी चाहिए. लोग अरे उसको बहुत बहुत मिलनी चाहिए. बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ गुड इवनिंग आई मीन वो ठीक है, बट यार दैट गाय हैज कंसिस्टेंटली प्रूवन हिमसेल्फ इन यूरोप, राइट? Yeah. ही पीएसजी के साथ उसने लीग वन भी जीता. चलो ठीक है पीएसजी के साथ जीता, कोई बोल देंगे कि ये था वो था, बट ठीक है. तो मतलब ये गेम काफी टफ होने वाला है. But we have to start with our best players. I think there is no chance Robertson should not play today, although he played a very grueling. Everybody played a very grueling 90 minutes against Everton. But Yeah. if you want to win big prizes, then this is the price you pay. You have to keep playing. मतलब अभी वही है मतलब it's game by game like I think we've spoken in the past like Klopp believes in it genuinely or Liverpool players मतलब it's the mentality like I think we've seen on your chance as well. It's about the mentality monsters that Liverpool have and that's the reality and that's something that we need to take a leaf out of for sure. मैं accept करूँगा as Chelsea fan, right? But Nitika again coming back to the same thing now. I'm just looking at the fixtures. आपका Newcastle away है on Saturday. It's an early kickoff. What will it take for the Premier League to understand, boss? As in, our team is there in the Champions League semi-final. And again, I'm not a Liverpool fan. Far from it, people. मैंने बोला Liverpool is my number one opposition. But again, I am for Premier League teams here. I'm like, what will it take for them to have the schedule to kind of fix it? Because I think Villarreal have had an easy fixture. They are playing Alaves. They're not even there in the La And Liga. they are well rested. Exactly. So, मतलब, at what point there has to be some point, Nitika, that the Premier League will understand, and I don't know what will it take for you for them to actually change that schedule or give them the preference.
I don't know why do they make these decisions, you know? क्या वो तंग करने को बना रहे कि यार फिर से क्लॉप आएगा, फिर से हमको बोलेगा कि यार देख लो थोड़ा सा दूर, मतलब क्या है पॉइंट, क्या है इन चीजों का? When you know there's a team already playing, they are in contention of, you know, हम we can't afford to lose, it's as simple as that. I know उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इस चीज से, but then they can at least switch the fixtures up यार, थोड़ा तो लेट कर दो इस चीज को. But it just they never understand. And you know what, I like read a lot of history related to anything that's happening in football, and I realized by reading that कि हर रूल जो भी बनता है ना वो एफए सबसे एंड में करता है. एफए ऑफ इंग्लैंड, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड, वो सबसे एंड में सोचेगा कुछ ना कुछ, यार हाँ अब सोच लेते हैं चलो इस चीज को करने का. आई डोंट नो व्हाई डू दे डू दैट, यू नो? मतलब क्यों कि एक And आधी टीम. नहीं नहीं, sorry to cut you there, Nitika. Like honestly, मैं मतलब I have tweeted about it, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा. People have seen it. That as opposition fans, a lot of us feel कि Liverpool kind of gets a soft bias at times when it comes to these things. But no, if you see clearly, अब दिख रहा है, there is no soft bias. I don't think there is absolutely any bias when it comes to fixtures, etc. And it's a reality of it. और यहाँ पर राहुल भाई पूछ रहे हैं अपने कंगना के साथ. I think watch along. By the way, I'm assuming you're doing it, Nitika. I wanted to, but I think I'm not doing it this time. अरे I'm so sorry. बट मेरे को तुम दोनों से एक क्वेश्चन है यार, अंकित एंड नितिका. डू यू गाइस एंजॉय वॉच अलोंग्स? आई डोंट. I enjoy when there is drama and I'm a neutral. कल मैं enjoy किया था काफी. I enjoyed the Liverpool Man City game. So there are watch-alongs which are fantastic क्योंकि यार you actually kind of have a lot of नहीं banter मैं with मैं तुम neutral. दोनों की बात कर रहा हूँ. डू यू लाइक डूइंग वॉच? Chelsea के matches I don't enjoy. मैं इतना nervous होता हूँ. I don't enjoy at all. I don't enjoy because Well, I'm not in my element. if I have to speak honestly here, I don't. That's why you don't see that happening every time, because you know why? क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज, दैट्स व्हाई यू सी आई डोंट डू अ लॉट ऑफ लाइव्स. मैं बहुत कंफ्यूज आती हूँ, मैं कमेंट्स देखूँ, मैं मैच देखूँ, है ना? एंड देयर इज दैट नर्वसनेस बिकॉज आई नीड टू. हम कैसे, सब लोग कैसे मैचेस देखते हैं, घर ऐसे लेटे हुए मस्त मैच देखेंगे. आई वांट टू वॉच द मैच एज अ फैन, नॉट एज अ क्रिएटर, Yeah, for at least that point of time. especially So Chelsea का तो I 100% agree because I feel exactly the same. AC Milan, Chelsea, I can say. लेकिन हाँ, I am yeah. there just to let Rahul know and everyone in the chat. मैं कर रहा हूँ लेकिन on Baba's channel आज तो we are doing together. तो मैंने रख रहा था लेकिन मैं काफी लिटरली रोज स्ट्रीम कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हो. तो मैं बाबा को बोल दिया आप रख लीजिए आज. तो बाबा is keeping it and we are doing it there. कुछ वॉच अलोंग्स बहुत सही रहते हैं. जैसे मेरे को हाँ. मोहक के वॉच अलोंग्स बहुत सही लगते हैं. कोई वॉच अलोंग सही लगते हैं. बट यार मैं उतना बड़ा फैन, मतलब मैंने इन द मॉन्क पे वॉच अलोंग के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम. मतलब वी आर बोथ नॉट वेरी बिग फैंस ऑफ वॉच अलोंग. एंड कमेंट्री मिस होती है ना यार. लाइक यू वांट टू Yeah. लिसन टू पीटर ड्रूरी नो Exactly, व्हेन यू exactly. वॉच फुटबॉल. Exactly. Yes, absolutely यार. गुरुजी अभी busy है, but आ जाना यार बाबा के चैनल में आज. We'll probably do. लेकिन coming back to basically this game as well. By the way यार, we are having what over 100 people watching, 150 people watching. Or come on, we just have 100 likes. It's not done. It's absolutely not done. Let's get the likes up. Or I'm assuming each one of them जो भी देख रहा है अभी तक has subscribed to Medicine the Monk, has subscribed to Indie Cop, and of course Almighty Blues Cricket मत भूलना. There is one more channel. हाँ, RCB banter चलेगा वहाँ, लेकिन we cover lot of other stuff. तो आइए वहाँ पर we'll talk. Anyone who's a cricket fan, and yes, both can coexist cricket and football. Coming back to the game again, yeah, we spoke about the early kickoff and whatnot. लेकिन now that okay, you know that Villareal have the form that they have. लेकिन Liverpool, despite जो April का schedule था ना निधि, you guys have scored 2 goals in every match in April. Wow, that's something, man. I don't know, पता नहीं इतने सारे forwards आ गए after Luis Diaz. That's probably helping you, whatever आप बोलो. लेकिन अगर Villarreal, who kind of keep that shape at Anfield, where you've not done so well in Champions League comparatively, who's that one player you're banking on? He's like, okay, this is the player who'll open up Villarreal kind of team. I'm assuming I know the answer, but I'll take your take first. You're asking Nitika or me? You Nidhi. Okay. Open up Villareal. I think then obviously you're talking about the attackers. I think Diaz, if he plays, will be very very important today, because Diaz का क्या है ना कि he brings that chaos into the, जैसे एवर्टन वाले मैच में भी अगर आप देखोगे तो
उसके आते ही एवर्टन पूरा आउट ऑफ शेप. फर्स्ट हाफ में उन्होंने बहुत अच्छी डिफेंडिंग की, बियॉन्ड द थिएट्रिक्स एंड ऑल दैट दे डिफेंडेड वेल इन द फर्स्ट हाफ, राइट. उसके बाद जैसे डियाज आया तो दे गॉट पुल्ड आउट ऑफ शेप. So I think he will be very important in this game if he starts, or or Mane or Salah. Obviously, those two have to start. Um, but I think in this game, no, the most important player I feel is going to be Fabinho, because Yeah. if you look at Villareal, their engine is Danny Parejo, right? He is the guy who gets them flowing. We have to disrupt that. We have to break up play, and that's where Fabinho comes in. Fabinho also has the capability of playing that diagonal ball like Van Dijk, or he can take that shot, right? So I think the most important player in this, I know मैंने जो क्वेश्चन नहीं पूछा तो उसका भी आंसर दे दिया, but I think the most important player will be Fabinho. But अगर आप ओपन अप करने की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि Diaz should be that guy. Okay, interesting. यार किलियन एम्बापे इन द हाउस. बाय द वे किलियन एम्बापे, आप बोलिए कहां पर जा रहे हो बाय द वे नेक्स्ट सीजन? पहले कंफर्म करिए. न्यूकासल मैच कुड बी पोस्टपोन्ड. आपका पासपोर्ट कहीं कतारी शेख के पास तो नहीं है? पता नहीं क्या ही हो रहा है. कल तो वॉच अलोंग कर रहा था मैं, तो आई वाज डूइंग द वॉच अलोंग राइट फॉर द सिटी गेम एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ एज इन कोचेस इन. आज बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं. इंटरेस्टिंग चैट, लाइक रियली इंटरेस्टिंग मैन. मतलब आप लोग यू कीप मी अवेक सिंपली पुट, राइट. लेकिन हाँ, Nitika or Nidhi, do you know about this thing about Newcastle match could be postponed? I don't know. Okay, they couldn't be postponed because of contractual obligations. I don't know. Yeah, so मतलब उन्होंने try किया था. That's what Kylian Mbappe is trying to say, that they had tried to get it postponed, but because of contractual obligations with BT, वो नहीं कर पाए postpone. यार जो भी यार, मतलब honestly बहाने चलते हैं. मतलब EPL में money is everything, and that's the reality. English FA ना, they have that brown nosed approach. वो जनरली जैसे 5 सब्स्टिट्यूट का रूल भी सबसे एंड में यही लेके आए, VAR सबसे एंड में यही लेके आए. वो इट्स नॉट लिवरपूल और चेल्सी और यूनाइटेड और सिटी और आर्सेनल. इट्स वो इंग्लिश FA का थोड़ा है कि वो थोड़ा मतलब इंडियन गवर्नमेंट टाइप की, नहीं हम तो जो कर रहे हैं वो सही है. वो दे आर द मार्केटिंग में एक टर्म होता है लैगार्ड्स. तो दे आर द लैगार्ड्स. एनी चेंज दे विल बी द लास्ट पीपल टू अडॉप्ट इट, and they generally don't adopt it well. VAR का देख ही रहे हो. और अगेन मतलब मैं सरप्राइज नहीं हूँ, चैट में काफी सारा सपोर्ट आ रहा है विलारियल के लिए, काफी सारा. मतलब आई कांट इवन टेल यू हाउ मच. मतलब दैट इज लाइक वाओ, आई हैव नेवर सीन such kind of neutral support for any club. लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉपर विलारियल फैन, इफ आई एम एबल टू मीट, आई वुड रियली लाइक टू आस्क लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन हाँ, एक और शॉक मिलेगा UCL में. लिवरपूल फैंस बहुत रोने वाले हैं यार. बायर्न म्यूनिख फैन, लाइक आई नो विलारियल के साथ बहुत बुरा हुआ था आपके साथ, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ फुटबॉल. Again, Rona is not part of football. I would not go to that. Lekin the fact that shocks are always on UCL nights, and that's what Klopp will be knowing. Again, I think you guys have met. Nitika, you have met Villareal. I think it was Europa League semi-finals. 2015-16. Yeah. You lost one game, and the second leg you came back and beat them, right? So, would you take anything out of that game? I know it's been a while. Lekin Villareal, we played in the Super Cup. They are a cup team for sure, right? And of course, like मैंने बोला एमरी के बारे में. So would you take anything out of that game that you can recall, or who's the danger player for Villareal for you? See, football changes every day. The team changes every day. So it's like I think you learn a lot. Had Klopp won that time, he reached us till the semi-final. We reached till semi-finals and we lost against Sevilla. But अगर उस time पे जीत जाते तो किस तरीके का हमारा progression होता आगे तक. मतलब a lot of things depends on एक दूसरे के साथ, I feel. So I also feel that now that we are going to play Villareal, and I know they are the underdog team, but still it's going to be a difficult match. चाहे जो लोग जितना मर्जी ये चीज बोल दे कि तुमको तो easy fixture मिला है, but trust me, when it comes to playing against an underdog ना, the mentality, the everything is very different. बहुत different होता है यार. And ठीक है, अब ठीक जो भी लगा लो यार, हमको मिला है easy fixture, जो भी मिला है, whatever you want to call it, but we didn't have a very निधिका नहीं मिला है ना easy fixture. हमारे ग्रुप स्टेज में एथलेटिको था. हमने इटालियन सीरिया चैंपियंस के साथ हमारा राउंड ऑफ 16 था. एक बेन इंटर मिलान, then we played Porto. That's a group of death that was. ये जो विलारियल है वो बायर्न और यूवेंटस को हरा के आई है. तो इजी रन कहाँ से मिला है हमको?
Yeah. That is No, what, man. and it's like, Yeah. and this is the one thing that I keep getting from everybody in my comment section कि क्या ही है, तुम तो विलारियल बेंफिका के साथ खेल के यहाँ तक पहुंचे हो, see what Real Madrid is doing, see what Man City had to go through. मैंने बोला कि भाई मतलब what is the point of this? Like you don't see that we also had the group of death in which we, I think, won every match. We had Dominated. Well, easily that's an won. understatement. We मतलब मेरी टीम थी यार, AC मिलान, my second team was there, and हमें पता है क्या बुरी तरह पेली थी लिवरपूल. Second team of सेकंड फिनिश Liverpool. किया था एसी मिलान ने सीरिया में. Yeah. It was like, that's what I'm yeah, saying. Like, and then there we is got no Inter comparison. Milan. Exactly. Then we got Inter Milan, and then पहले people were like यार इंटर तुमको धोके रख देगा एंड ऑल. ठीक है, जब मैच हो गया और हम जीत गए और आगे पहुंच के बोले अरे तुम्हारा तो इंटर के साथ था ये सब. यार ये अब के इतना जी इतने यार, ज्यादा ये मैचेस आ आज रहे आज हैं सही आज बहुत आ में. रहे हैं, मतलब आता है, आई नो दैट, बट आज तो हाँ. लिटरली वाला एवरीवन मैन, एज इन अगेन थैंक्स यार एवरीवन टू कमेंट. आई एम टेलिंग फ्रॉम निधि's पर्सपेक्टिव ऑलरेडी, आई एम प्रीटी श्योर ही इज लाइक ब्लशिंग ऑलरेडी, आई कैन सी दैट. लेकिन मतलब मैं क्विकली बोलना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट हम बोल रहे हैं. सी, I actually feel otherwise. Reality is, compared to many other teams, yes, you have got maybe little easy fixtures in knockout this year, but Champions League में होता है, that is part of Champions League. We have won Champions League twice. If not for those fixtures, हम नहीं जीत पाते. And I don't have any qualms about saying that we were lucky. So what? Big deal, man. We have finally beaten any team that came our way, and we have the champions. That's what I said for the last And, year. and you know what, we could have faced Bayern Munich now. तब बोलते कि Liverpool is lucky. We could have faced. अब वो हार गए, हमारी गलती है. We had to face Villareal. I'm not even saying कि Villareal बहुत easy होने वाला है. मैं तो पहले ही बोल रही हूँ it's not going to be. तो फिर लोग बोलेंगे very pessimistic, but I can't help it then. It's not going to be easy, or it's as simple as that. Yeah. As in, like just fella says, UCL knockout tie is never easy, especially in Exactly. semi-final. We know against Porto Exactly. what happened last season हमारे साथ. Second leg Very was so very nervy. good point by Just Weiler. Exactly. As in, that's a Yeah, you remember reality of that it. Ajax versus Tottenham वाला match? You remember semi-final था यार. Wow. आज तो ये chat का पूरा discussion ही change हो जाना चाहिए. It's going to be about Nidhi and the glasses. People vote in here. मतलब कितने लोग हो? As in Nidhi in the chat हो जाए यार. Nidhi in for Liverpool, the next manager. I don't mind getting a Klopp. I'm just saying that. I know बहुत hate मिलने वाला है इसके लिए. लेकिन yes, 200 people watching live, good going man. Yes, लेकिन यार 200 people like कर दीजिए. Big up to Abdhani, and he is one of probably my friend whom I started watching football with. So much respect to Wow. this guy. Chandru in the chat. Very good to see you in the chat, buddy. Big, probably the biggest Liverpool fan that I know. He is. ये मेरे दोस्त लोग कहाँ होते हैं जब मैं लाइव होती हूँ? कोई नहीं आता है उस टाइम पे. आज तक नहीं था, आया बैंटर करने के लिए. तू नहीं है, लास्ट सीजन आया किया ना बैंटर, चैंपियंस ऑफ यूरोप. So he's come back to say that, oh, we are back in the Champions League, baby, and that's what. मतलब I congratulate him. I remember 3 years ago, he's in the US, but absolutely wonderful having you, Chandru. Again, ping me, buddy, as in it will be great to actually have you as well. If you can come on, great, because he knows his stuff. This guy knows his stuff, and really good to have. Yes, of course. Everyone, let's like the stream. Do check out Indie Cop. Do check out Menace in the Monk. Trust me. Again, yes, they are Liverpool fans. I am a Chelsea fan, but we kind of cover a lot of content that you won't be, disappointed with. Underestimating Emery will never, and well for everyone. So I'll tell you something here. Emery, just giving you a stat, 31 times out of 37 times he's advanced in European knockout ties. I think history of knockout ties में he's second, and that's for all managers across the world ever. And the first Another reason manager, this is not an easy fixture. Another reason. yeah, exactly. And no, that's a fact. I would take that anyway, because I think it's just because of Arsenal days. He got whatever he's been getting. ना वो good evening बोलता है, and all those things. उसको टाइम नहीं मिला आर्सेनल में. उसको टाइम नहीं मिला आर्सेनल में. Exactly. Right. And Liverpool भी यार, मतलब in the Europa League, if you remember, they beat Liverpool in one leg, और second leg में they would have kind of as in again beaten them. Who knows, right? Villareal as a team as well. लेकिन Zinedine Zidane is the first one. I know a lot of Real Madrid fans are in the chat. Again, I would say another underrated manager, Zinedine Zidane. So very interesting. But I'm just, because हम Zidane की quickly बात कर रहे हैं यहाँ पर. Nidhi, where do you see him? Like लोग बोल रहे PSG, but अभी Conte का news आ रहा है. तो where does Zidane go, man? This guy needs some management for sure. यार मैंने तो बाय द वे आई टोटली एग्री विद दिस. यार क्लॉप बहुत ही ज्यादा बड़ा काम कर रहा है, वो मेरे बस की बात नहीं है. I'll be the first person to accept, but हाँ, beyond the joke, यार
Zidane का I heard the French national team का name also in the Yeah, mix of the places that's that he can हाँ वो potentially भी है. go to. Juventus was another name that I read. Uh, I don't know where he will eventually go, but the France job sort of seems like क्या क्या हो चल रहा है रहा यार आज? Sorry, है ये I had to नितिका get I'm that in. having fun. ये I'm नहीं having fun. नहीं फन नहीं, ये तुम्ही ने शुरू किया अपने आप को कंगना बोल के, ये तुम हाँ exactly. मैंने अपने आप को कंगना नहीं बोला, मैं बता रही थी कि निकी जैसे और कुछ होता है कुछ. ना उसे. Yeah, please Nidhi, yeah, continue भाई. No. I'm saying that yeah, the France job seems like a fit. Um, yeah, exactly, Nikhil. I agree. Personally, I also feel that it feels like a a fit because France also need that little bit of injection. अभी यूरो में वो लोग जल्दी बाहर हो गए थे एंड जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था. उनके पास ऑब्वियसली काफी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं. तो आई फील एंड जिदान ना काफी अंडररेटेड है एज अ मैनेजर. लोग बोल देते हैं कि रियल मैड्रिड में था और ये था, बट यार उसके टैक्टिक्स वगैरह काफी अच्छे रहे हैं. Zidane is, I think he gets less credit as a manager. Yes, he won the but उसने थ्री-पीट किया यार रियल मैड्रिड के साथ. उनका सिस्टम चेंज किया, काफी हद तक उनके ओवरऑल के लिए रिस्पॉन्सिबल था. आई वुड लाइक टू सी जिदान इन अ प्रीमियर लीग क्लब एज वेल, बट अभी तो वो नहीं होने के चांसेस. अभी तो मुझे लगता है कि वो अभी तो मुझे लगता है कि फ्रांस ही जाएगा. अरे भाई थोड़ा फुटबॉल पे बात कर लो भाई. हेमंत, come on भाई यार, आर्टेटा तो मत बुलाओ भाई, come on, आर्टेटा नहीं, एमरी इज स्टिल थोड़ा बेटर. आर्सेनल मैनेजर, करंट मैनेजर हेमंत, ये तो गाली हो गया. आप तो चेल्सी फैन हो, लेकिन यहाँ पर कुछ कमेंट्स में एज एन टिप्स मिलते हुए, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टिप्स. लेकिन हाँ, don't worry guys, I was compared to Rafa Benitez, Sadiq bhai 2 days back, so you guys should be grateful. Acha, so that is a trend. Now I understand, Sadiq bhai started the trend. Oh God. ये So सादिक भाई का I'll get hold पूरा of you. ये सादिक भाई का पूरा आइडिया है. नहीं, exactly. But having said that, he probably looked like Rafa Benitez. Just a fun there. Exactly. लेकिन no chance coming to Juventus. Yeah, I think probably वही national team हाँ manager. मतलब मैंने बस पढ़ा था कि दैट इज वन ऑफ, बिकॉज वो यूवेंटस के लिए खेला भी है ना, तो मतलब वन ऑफ द नेम्स दैट वाज थ्रोन इन. बट हाँ, यूवेंटस इज प्रॉब्ली वेरी अनलाइकली. Yep, absolutely. Now, again, just talking about Villareal form, लेकिन I think they have won 3 on the road and drawn in one in the last 4 UCL away games, scoring in each. तो again, Nitika, हमने बात किया, Klopp doesn't like to change and whatnot, but the fact that they have been scoring in each away game or away record has been particularly impressive. जहाँ पर you have not done so well compared to as in your away games, right? So, would you say that Klopp would maybe, as in have more steel in midfield, more steel in defense? What is your lineup? Let's talk about the lineup. Konate versus Matip, the normal conversation, and of course the midfield, Keita, for instance. See, वैसे तो यूजुअल वही एलिसन, देन ट्रेंट, रॉबर्टसन, वैन डाइक, मतलब देयर आर वो पीपल जो होने ही वाले हैं, माने, देन साला एंड देन फबिन्यो. तो देयर आर दिस पीपल दैट आर गोइंग टू बी देयर, लाइक थियागो इज गोइंग टू बी देयर, राइट? बट जो कुछ प्लेसेस हैं वेयर वी कैन डिस्कस, एंड दैट इज मैटिप और इज इट गोइंग टू बी कोनाटे. I feel that we should go for Konate in this one, because I think that we would need that physicality of Konate in this match more than what Matip brings to the team. See what happens. What I feel that happens in the matches कि अगर Konate साथ में रहेगा ना, तो क्या होगा? Since they are scoring goals just like you said, and there are players like Danjuma, and then they're very young players यार, and Gerard Moreno नहीं होगा आज even though, but still Yeremy Pino है right पे, है ना? Then I'm just saying वो that भी what injured they है. can do. Yeremy Pino भी injured Yeremy, है. but I just read that Gerard Moreno No, ही not injured है, but 100%, not 100%. So there is a chance कि दोनों ही miss out करें, and they might just go with your the proper forward line of Lo Celso and Dachuma. So they don't have many creators up front. वो एक थोड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि they will have a proper shape this time. और वो they have that one goal knack वाला. Danjuma brilliant pace and Lo Celso is the creator. So that's good enough for them, no?
Yeah, that's what I'm saying. They have very, very good quality players, And if there is another thing that they have is a very good defensive line, right? So what I feel is that we need Konate in that back line with Trent, so that Trent भी आगे जाके create कर पाए. लेकिन जब कोई ऐसा diagonal ball आता है, Matip Konate can make that run and be really good physicality wise वहां पे हो पाए more than Matip. And Matip has done very good in Premier League and he has been very very good. मतलब उसके stats को अगर तुम देखो, Van Dijk जितने stats हैं यार इस बार Matip के, and I didn't really expect that from him. I didn't, to be honest. I thought that ठीक है हम उसको as a ठीक है कि वो नहीं होता कि हाँ चॉइस में है हम कभी ले आएंगे, बट ही हैज बीन वेरी गुड. ऑलराइट, एंड देन अगर हम मिडफील्ड का बात करें, आई वुड लाइक टू गो विद कीटा हियर. एंड देन वैसे ही जैसे क्लॉप करता है आजकल, एंड द वे ही हैज बीन रोटेटिंग द स्क्वाड, एंड देन ब्रिंग इन हेंडरसन, बिकॉज उनका जो मिडफील्ड है ना, दैट इज वेरी सॉलिड. तो उनके मिडफील्ड से वो बहुत क्रिएट करते हैं. वी नीड टू ब्रेक दैट, एंड कीटा इज वेरी गुड डिफेंसिवली. व्हाट हैपेंस इज कि अगर एक ऐसा डायगनल बॉल आ जाता है, विच आई नो दैट हेंडो कांट मेक द रन. यार थोड़ा एज भी हो गया, जो मर्जी लगा लो. Sometimes he takes those risks through balls, and I have nothing against the captain. I love him. I'm just saying for the match, what we need in the first half. We need to dominate in the first half. We can't have the 0-0 score line in the first half. Maybe then later on Klopp makes some changes and that something like that happens. But let's go with positivity here. So I'll put Keita there. And Keita has been performing very well, very, very well, especially in the recent matches. And then forward line में साला माने होंगे. साला ने बहुत सही टाइम पे गोल स्कोर करना शुरू कर दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच से. उसने थैंक गॉड गोल्स किए, एंड देन ही इज बैक इन द फॉर्म एंड ऑल. He should do that. And then like Nidhi mentioned, we need to have Luis Diaz for the chaos. He is Okay. chaos, and we need to have that, because अगर वो low block खेलेंगे, if there is somebody who can cut through that, it's going to be Diaz. He's brilliant that way. The way he carries the ball, it's amazing. अरे उसका pass तो इतना meme टाइप सब हर जगह share हो ही रहा है. The way he took that assist, the control on the ball. I think we need that kind of players abhi in the first half especially. Then according to the game, I believe in Klopp. He'll make the right substitutions and will win the match. Touch wood. Yeah. Yeah. Again, yeah, यहाँ पर Henderson shouldn't play is what Himmat is saying, and Trent will struggle against Danjuma. Yeah, that's a great point क्योंकि जो pace है ना Danjuma का, he is something else. मतलब And that's another Nidhi, point why yeah, Konate should start here, yeah. because और that's I was coming to Nidhi. Danjuma has been linked with Liverpool as well. पता नहीं maybe Yeah. because of Origi possibly going hmm. to AC Milan. There is probably एक proper as in show होने वाला है यहाँ पर. भाई हम कितने अभी तो जगह नहीं है. But Danjuma to Liverpool, I don't think that story has any legs. I एम्बापे don't टू think. लिवरपूल भी था एक बार, मेरे को अरे याद है लोग नितिका, इतना. अभी तू मैं तो believe भी मतलब, कर दिया था. I was among the हाँ, people मैं who भी believed मैं in भी Mbappe. बिटकॉइन खरीदने का सोच रहा हूँ. तो नहीं यार देखो, अ, honestly, I would personally start with Matip in this game, and I'll tell you why. Konate is great, but Matip has the experience. One of the reasons why Virgil van Dijk has looked so good in this season after coming back from such a horrible injury is because Matip खेल रहा है ये team में, and Matip काफी ज्यादा settled है. He can intercept play really well. कोनाटे के साथ हमने देखा था, अगर बेनफिका के मैच में भी he was the one to give the ball away. उसने उसमें, and that's nothing against Hmm. Konate, right? He has that उतना experience नहीं है. He's very young, right? Mhm. But he adds a threat from the set plays. That is also there. उसने अभी 3 होम गेम्स में स्कोर किया है, तो वो है. But I would start with Matip in this game purely because of the experience he brings in and how well he can intercept play personally. But अगर कोनाटे स्टार्ट करता है तो इट्स नॉट लाइक इट्स अ डिजास्टर और एनीथिंग. एंड ऑनेस्टली आई नो पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट हेंडरसन फॉर स्टार्टिंग इन दिस गेम. Mhm. According to me, we need Henderson in this team. You need a leader in this team. Not see, we have been blessed कि हमारे टीम में सब चारों तरफ लीडर्स ही लीडर्स हैं. Virgil is Netherlands captain, Robertson is Scotland captain. Then you have Salah, Mane, who are all captains, right? So I think, but you need someone who is vocal, who can communicate, because Villarreal will also try to move the ball quickly जब उनको chances मिलेंगे.
and we need someone with who is vocal, who has experience. I understand Nitika's point about ki Henderson aage bhag nahi pata, but if you look at this season, one of the things, if you watch Liverpool closely, is that Trent has been playing a lot centrally, and Henderson Hmm. वो positions पे जाता है. You'll find a lot of times where Henderson is on the on the corners, not the corners, I विड्थ mean पे वो है, on the wing, वो काफी right? विड्थ पे जा रहा है, एंड देन और ट्रेंट एंड शुरू रॉबर्टसन में काफी काफी length में। क्रिटिसिज्म हुआ था, शुरू में काफी क्रिटिसिज्म हुआ था इस बात का कि because what is Henderson doing, he's pulling himself out of position, but that was a subtle change made by Klopp, because that was a लेकिन subtle सॉरी change. निधि, if I can interrupt you, इससे पहले ये Please. पर्सन गो comment goes away, और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है. अगेन आई नो वी आर हैविंग फन हियर, एंड अगेन देखो, वी डोंट क्लेम दैट वी आर एक्सपर्ट्स. फर्स्टली लेट्स गेट दैट राइट. नन ऑफ अस क्लेम दैट हम एक्सपर्ट्स हैं. हम ओपन स्ट्रीम भी करते काफी बार, लाइक मे बी ए बी यू डोंट नो, वी डू अ लॉट ऑफ ओपन स्ट्रीम्स ऑन ऑलमाइटी ब्लू. जैसे यू आर वेलकम, ब्रदर और सिस्टर, यू आर डेफिनेटली वेलकम. We do open streams as well. It's just about sharing opinions as a fan, and every fan has an opinion. uh, Whether you follow the sport for 1 day or 100 days, 1,000 days, doesn't matter. Whether आप follow करो India से, US से और China से, doesn't matter. Again, I don't think you know about me personally to comment that where I've been, and same thing about Nidhi and Nitika, and I'm pretty sure any open stream panel also. And just so you know, we have a cricket channel, bhai. Let's get that right. We have Almighty Blues Cricket, and Almighty Blues AB. You यार are बट called AB. मैं बस एक चीज बोलूंगा यार, ये भी आप इंडियन बोल रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ एक बार, वो भी इंडिया का ही पार्ट है. वहां पे आपको हम तो खैर एक्सपर्ट, मतलब मैं तो नहीं हूँ, अरे मैं मैं तो कोलकाता में बैठी हूँ, एंड हाँ आई एम टेलिंग यू कोलकाता. द फुटबॉल कल्चर हियर, आई हैव बीन अरे टू देयर मैचेस हियर. मैं खुद झारखंड से हूँ. वहां पे ऑब्वियसली उतनी फैसिलिटीज नहीं है, बट क्रिकेट फुटबॉल दोनों ही काफी ऊपर है. बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट. Yeah, please, please. Yeah. No, So, तो what I was saying is कि Henderson का वो जो रोल है ना, because a lot of Trent's assists, a lot of his playmaking has come on not from the wings. If you watch Liverpool closely this particular season, that has been a subtle change made by Klopp, right? एब्सोल्युटली. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब इस मैच में तो मुझे तो लगता है कि हेंडरसन को स्टार्ट करना चाहिए. बट अगेन टचवुड, वी आर इन सच अ पोजीशन कि अगर जो नितिका ने बोला कि अगर कोनाटे और केटा भी स्टार्ट करते हैं, तो नॉट लाइक आई बी ओ इट्स अ डिजास्टर और समथिंग. yeah, I I can only agree. envy you there. थोड़ा लंबा आंसर हो गया. नहीं, काफी अच्छा लगा. एंड ऑफ कोर्स अब बीच में मसाला अपना I'll चैट just का तो बहुत just बढ़िया. tell one more thing here. Like जैसे कल फर्नांडिन्हो का जो असिस्ट रहा है ना, now that is something you will see a lot from Trent पहले, and that had become so predictable, and that's what I used to think कि कोई भी टीम हमारे against आराम से defend कर लेती है, and because that's our gameplay, and this is something, the transition that Klopp has done this season, and Nidhi has pointed that out correctly कि हमारे रॉबर्टसन भी एंड ट्रेंट भी अब वो बहुत इनसाइड जाते हैं, रादर देन वो विड्थ पे स्पेस बनाने के लिए ताकि आगे जाके वो क्रॉस दे और अंदर जाके कोई गोल करे, एंड दैट Yeah, इज अनदर जीनियस मूव बाय क्लॉप आई फील, एंड दैट्स व्हाट निधि absolutely. मेंशन्ड. Yeah, and again, like I know अभी थोड़ा सा टॉक्सिसिटी शुरू हो गया है चैट में, which I really was avoiding अभी तक, लेकिन वही है, certain chat, अरे comments important let's है. concentrate on football यार. Yeah, absolutely. और यार again, I'm looking at what 165 people almost are watching the stream, और मैं देख रहा हूँ यार likes अभी तक 200 नहीं हुए, तो let's get the likes up, और सब लोग please subscribe, and maybe thank you to remind about Almighty Blues Cricket. Promotion is very important for me. Trust me, I need that right now. So yes, anyone who watches a little bit of cricket और नहीं भी जानता है तो यार हम बात करेंगे, सीख जाएंगे आपस में. That's what we really believe. And yes, you did provoke us, and that was a great comment for that. Like, and absolutely. Coming to basically, I think the comments again, एक brilliant comment था, and that is something that I want Nidhi to do it. Nidhi, I know that you probably will say, Ankit, यार next time मैं आने नहीं वाला, but doing a Klopp impression. That is basically the भाई demand. ये The यार demand तुम from लोग ने today. इसको अब तो बनता है, अब तो Get बनता क्या है. कर रहे हो यार Get तुम लोग ने इसको, मतलब वो MTV सेलेक्ट पे नहीं आए हो भाई, तुम लोग क्या चालू है. मैं नहीं कर सकता यार, क्लॉप बहुत बड़ा आदमी है, मतलब मेरे बस की नहीं है. I do that Jurgen thing now that he did Abhi recently in the press conference. Jurgen, that Scouse accent. Come on, Nidhi, yaar. हाँ? Nitika is Milner, and Nidhi is basically Jurgen Klopp, right? And Nitika धीरे से बोलती है, कैमरा आ रहा है, भाई ये सब क्या करवा रहे हो यार. चलो ये सब नहीं होगा मेरे से, मतलब नहीं, just joking. कहाँ से मैं क्लॉप जैसा दिखता हूँ पता नहीं.
Absolutely. But again, like, some questions here. I don't know if you guys have a few more minutes, Nidhi and Nitika. We'll probably take a few questions if that's okay with you. यकीन. तो अगेन बैलन डोर तो यार मैं नहीं जाने वाला, दैट विल बी अनदर कंट्रोवर्सी. तो वो तो क्वेश्चन आई थिंक आई विल अवॉइड. पेप की सिटी एक यूसीएल तो डिजर्व करती है ना, व्हाट मतलब वो एक डिबेट मैंने कल भी वॉच अराउंड के दौरान किया था कि डू वी बिलीव इन दैट थिंग दैट अ टीम डिजर्व्स टू विन द, मतलब व्हाट इज इट that a team deserves to win, मतलब what is the definition of that? Are you into that, Nidhi? No. See, वैसे तो फिर बहुत सारी टीम्स हैं हिस्ट्री में, अभी मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यूवेंटस भी डिजर्व करती है ना फिर एक चैंपियंस लीग. मतलब दे हैव डोमिनेटेड देयर लीग फॉर सो लॉन्ग, दे डिजर्व, आर्सेनल हैव बीन प्लेइंग सो वेल. बहुत पहले तक अगर मैं चेल्सी के बारे में 2012 से पहले, तो चेल्सी भी डिजर्व करती थी. अरे हर एक सीजन में मुझे लगता था, आई यूज्ड टू से दैट माय सेल्फ. मैं मतलब अगेन आई वोंट डिनाई कि मैं खुद बोलता था हम डिजर्व करते हैं, बट ओवर द टाइम मैंने रियलाइज किया देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइक डिजर्व, टू बी ऑनेस्ट. दैट्स व्हाट वी लव अबाउट फुटबॉल. द थिंग इज यार, डिजर्व तो देखो ऑनेस्टली, बट मैं एक बात बोलूंगा कि पेप रियली वांट्स टू विन द चैंपियंस लीग, क्योंकि उसका बस एक ही रह गया है मैन सिटी में अचीव करने के लिए, वो है चैंपियंस लीग. बट ऐसा नहीं है कि मतलब अगर उसने चैंपियंस लीग नहीं जीता तो कोई बोल देगा कि हिज रेन डिडंट वर्क आउट. आई नो सोशल मीडिया, आई नो नितेश, यूवेंटस हैव वन इट बिफोर, बट मतलब दे डिजर्व अ लॉट मोर. मैंने कहा एसी मिलान, रिमेंबर शेवचेंको एज इन किक देम आउट बिकॉज़ ऑफ द पेनल्टी किक. हां, मैं मॉडर्न एरा की बात कर रहा हूं. एग्जैक्टली. हां, तो मतलब अब जैसे ये है, सॉरी वेयर वाज आई, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, यस, सो पेप का यार देखो, थोड़ा वो सोशल मीडिया पे या ये सब पे होता है कि नहीं जीता तो फेलियर है एंड ऑल दैट. I think Pep has done something absolutely amazing at Man City. He has pushed Liverpool to be at their best, and so have we. Let's be honest. We have kept them on their toes. They have kept us on their toes. So deserve तो यार मैं बोलूंगा फिर रियल मैड्रिड भी करती है, विलारियल भी करती है, सिटी भी करती है और लिवरपूल भी करती है, तभी यहाँ पे है. तो that's my answer. Agree. Again, I'll put this question to Nitika. और यहाँ पर I think we had a question earlier as well. I think it was. Let me actually give a quick shout out as well. We had Sushant again, asking that question, and I think Suraj also had asked. Sadiq bhai asks here, I know you want to win them all, but as a Liverpool fan, which trophy do you prefer, Premier League or UCL, Nitika? I want to have both. Obviously, I want to have both. It's so difficult to pick one. Minus points मिलेंगे वैसे आंसर के लिए. It's so difficult to answer this. You know why? Because see, I need the Champions League with 7 हो जाएगा, and that's like AC Milan जितना हो जाएगा, second in the row, after Real Madrid. That's amazing, right? And English teams भी अभी धीरे धीरे जीत रही हैं, तो I want to have that supremacy there, at least somewhere. And then I know how difficult it is to win Premier League, how difficult it is to be there at the top, because like I mentioned before, it's 38 matches on, and to go again that whole round and be at the position that where we are right now, even though abhi bhi surety nahi hai. Agar hum top pe hote na, to I would have picked Premier League, but since abhi chances zyada hai ki hum UCL jeet sakte hain, to I'll go with that. Okay, fair enough. And again, like I know a lot of people यहाँ for first time आ रहे हैं. I'm seeing a lot of names, and which is great to see. I'm hoping कि आपने check कर दिया हमारे चारों channels. हाँ, there are 4 channels in the 3 of us, so you can definitely check it out. Links are in the description, first 2 lines. तो again, coming back to couple more questions यहाँ पर. अच्छा, Sagnik is actually asking me who's your favorite Liverpool player. बहुत controversial question है, by the way. बड़ा अच्छा question है. हाँ, बहुत अच्छा question है. Let's put you on the spot. Yeah. Yeah, I think probably, मतलब again very few have kind of played ना Chelsea Liverpool के लिए. मतलब I don't know if he's talking about current squad में, so I will go with नहीं, current के बारे में I want to know. current में Virgil van Dijk वो easy है. मैं Dutch fan हूँ. I am a Dutch stan. मतलब probably you guys know about it already, right? तो मतलब Dutch football I have followed like crazy. So it has to be Van Dijk any day. मतलब I'm hoping that he'll get us somewhere when it comes to Dutch football. Finally एक बंदा आया जो actually looks calm as a captain, and probably he'll take us to the next level. And all time though, I have to say, as much as I hated the guy when he was at his prime, I hated him. And I know it's a very strong word. I actually did that. Very few I say that. लेकिन
as a footballer, if I'm being very very honest, I really wanted him at Chelsea, and that was Steven Gerrard. I know बहुत लोग बोलेंगे Steven Gerrard, Lampard के नहीं चले थे. That was because of the managers in England. Trust me, any two players could have played, and he was a fantastic player. I kind of envied Liverpool always when you had, despite was slip or despite that own goal, I had to get that in just Oh, for bite you the. had to say that. You had to नहीं twist the नहीं knife, no? नहीं नहीं मतलब अगेन बैंटर है भाई मतलब सब लोग यार ये मत सोचो कि यार भाई आया बुलाया इंसल्ट कर लिया नहीं एब्सोल्युटली जस्ट बैंटर नहीं आई नहीं, अंडरस्टैंड वन ऑफ अब द तो मैं लेजेंड्स भड़क गया हूँ. यार टाइम आउट दीजिए किसी को क्यों टाइम आउट मार दिया फ्री में गलती से हो गया डीएसजे इज अ रेगुलर मेंबर यहाँ पर आई होप ये गलती से हुआ है बट यस लेट्स एक्चुअली नॉट क्रॉस एनी लाइंस आई नो काफी डिस्कशन हो रहा है आज एंड ओके सूरज का इंटरेस्टिंग है वही काइंड ऑफ ट्विस्टेड क्वेश्चन है क्विकली अरे बाप रे. अगेन मैं सूरज इज अ चेल्सी फैन नो सीक्रेट्स देयर इसलिए आ रहा है क्वेश्चन लेकिन अगेन लाइक कम ऑन अगर ट्रेबल मिलता है तो दैट्स हिस्ट्री क्रिएटेड इन इटसेल्फ अगर वो होता है तो यू विल टेक दैट राइट स्टिल You're asking Nidhi? या निधि फर्स्ट में दिया यार ट्रेबल मतलब 3 ट्रॉफी जीतना मतलब हाउ कैन हु विल नॉट बी हैप्पी. एंड यार चेल्सी बहुत अच्छी टीम है. दे गेव 3 times वी प्लेड देम इन दिस सीजन. 90 मिनट्स में एक बार भी विनर नहीं निकला है. It took goalkeepers to take their penalties to separate us. So Yeah. there is no shame in losing to Chelsea. They are a fantastic side. तो यार ऑब्वियसली मतलब अगर हम उसके अलावा लीग कप हम जीत चुके हैं और प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग हम जीत गए तो यार मतलब क्या ही बोलेंगे. हाँ मतलब वही है Obviously I'll be मतलब very happy. I would bite your hand off if I was on other side, right? And that's very clear. Obviously, Yes, I mean, who wouldn't? Absolutely. Last couple of questions ले लेते हैं यहाँ पर quickly. So Nitika, Salah, Mane, who is having a better season individually? Overall, आप बोलो तो Salah? नहीं? Can't we say both? Why do you have to pick one? Both are having an amazing season. वही Means they Ballon d'Or both play talk for में जा रहा है. Liverpool. I know where it's going the conversation, हाँ. but I think that Yeah, would I think probably. both are having a very, very good season. Both of them. Okay, big up to Amarjeet. Amarjeet, thank you. Of course, यहाँ पर यार my Canadian brother looks like absolutely Sadio और मैंने आज कनाडा का टी-शर्ट भी पहना है. Luckily, I don't know, just a coincidence. Sadio Mane started Klopp era, and people seem to forget that he is being criminally underappreciated. Even if he scores, people are commenting about the assists. This is यार probably ये ना अंकित मतलब मैं तो इसमें नहीं हूँ. मैं I'll tell you one incident. I had called Sadio Mane a superstar in November or December. And I got a lot of people laughed at that and बहुत सारी चीजें लोगों ने बोली कि तुमको पता नहीं है. मतलब सुपरस्टार की डेफिनेशन ही अलग होती है एंड ये वो. मैं बस बोलूंगा कि यार मैं सादियो माने इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. लोग अब उसको सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे तो लोग कुछ कुछ बोलेंगे ही. बट अमरजीत यार आई कैन गारंटी देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ लिवरपूल fans like me. I'm sure Nitika is also one of those. We have never forgotten about Sadio Never. Mane. He is Instead, yeah, absolutely. he is absolutely brilliant यार. I mean वो मैं तो बोल रहा हूँ कि यार if we win a major trophy, why shouldn't Mane not get the Ballon d'Or? He should be Absolutely. he should be मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है. yeah. I Right, get that. but- No, I agree. But- Instead, somebody asked me who is my favorite player. Like when I made a vlog on it, and I said it's Sadio Mane. Sadio Mane is the player for me. Yes, यार बाबा Baba अगेन is in the chat. हम Baba in the chat. वही बात कर रहे थे बाबा हम लोग कि यार ऑन बाबा चैनल वी आर डूइंग अ वॉच अलाउड वहां पर मतलब आई हैव नो कॉल्स अबाउट सेइंग दैट अगेन आई वुड लव टू सी ग्रेट फुटबॉल अगेन वे 4-3 हो जाए तो नथिंग लाइक इट उसका 50% हो जाए तो नथिंग लाइक इट बट यार अदन वही है सॉफ्ट कॉर्नर बोल रहा है यार विलारियल जस्ट अंडरडॉग स्टोरी बट यार लिवरपूल आप डिजर्व की पूछ रहे थे बहुत लोग मे बी देयर इज अ डिबेट दैट लिवरपूल probably दे कैन नॉट डिजर्व सो इन दिस थिंग बट अगेन यस ड्रॉग बाबा ओपी एवरीवन यहाँ पर अगेन लेट्स गेट टू प्रेडिक्शंस आई नो निधि डजंट डू प्रेडिक्शंस but Nitika let's do that come on let's do that and I want the scorers as well और मैंने बाकी सेमीफाइनल पैनल मेंबर से भी पूछा ये तो आई एम एक्चुअली डूइंग दैट थिंग नाउ एंड लेट्स सी व्हाट यू गेट I have to tell who is scoring the goals as well. करेक्ट अरे बाप रे. Oh, man. Nitika, get your मिनट crystal ऑफ ball out. सेकंड भी बोला तो बोल सकते दैट इज ऑप्शनल and everyone in the chat
All Everyone right, please put in your so score predictions. what are your score prediction? I didn't do prediction on my channel, I think. Yeah, so I think it's going to be 2-0 in favor of Liverpool. I think we're going to defend very, very well. And two people who are going to score today, one is going to be Virgil van Dijk. He's going to score a corner milega. He's going to score a header, really good header. And then the second player who's going to score is Mohamed Salah. So Okay. Mohamed Salah is going to score a really brilliant goal today. So that's what I think. बाकी कोई और मर्जी कर दे. I have no problem. I have no problem. Seriously. But this is what I कंगना think. कंगना जी, आप कुंडली उंडली में बनाती हैं क्या इतना स्पेसिफिक? अब ये Ankita, तुक्का such a हो रहा है. specific question. इतना specific question I'm he just asked me. I joking. thought let's not I'm do. just joking. ये देखो बाबा का प्रेडिक्शन आ गया. अब बाबा प्रेडिक्ट करी तो यार उसके सामने क्या ही तो करे. एब्सोल्युटली. बाबा 0-0 मत बोलो यार. मतलब वी आर डूइंग अ वॉच अलोंग. आई एम होपिंग फॉर गोल्स. Yes, I think Doug, he was supposed to join as well, but he couldn't join. Absolutely no worries, brother. You're always welcome. Great channel, everyone, Liverpool fans especially, do check it out. He does a lot of international content as well. You have to check it out. Dugout Football Channel. Again, I don't shout out to many channels. He's one of them for sure. Like again, I'll get in my score predictions here per quickly. I have to say that Liverpool will get at least an Anfield better of Villareal. अब interesting वही है कि यार second leg is backing Villareal, and that's going to be interesting next week. So if Villareal is able to get at least one goal Aj, that is good enough for them, and I can see that happening because of the way they are structured. They have a couple of injuries which might work in favor because they might have a better structure, and Liverpool will open up maybe just a couple of times. So 2-1 मैं जा रहा हूँ for Liverpool win, but yeah, Liverpool will win tonight at least. And scorers for me, again, I said Virgil van Dijk, and I think Nitika said that, but I think I'll probably go with Luis Diaz. Luis Diaz has that thing for me. Villareal के साथ he I think can suit क्योंकि वो open up करने के लिए great है, like I think Nidhi spoke about. And Thiago, he has been doing a madness. और मैं पहला जन हूँ, मैं अपना हाथ ऊपर करना चाहूँगा. I was one of those few as in delusion people जो बोलते हैं ना, I don't know what is the word, who said that Thiago cannot do that in the Premier League. I have to admit to the panel, I was one of them. ठीक है, लेकिन he's proven me wrong, and he probably, I would say that he might just get a goal today. Who knows, right? So yeah, 2 goals, and Danjuma, I think, for Villareal is what I'm hoping. Okay, 0-0. A lot of people 0-0. Dugout Football Channel says 2-0. Yeah, of course. Dog Baba के लिए like ठोको दोस्तों, और of course the brilliant panel यहाँ पर भी, and everyone in the chat. Each one of you deserves a like as well. The game could always be a Chelsea Liverpool like 0-0 draw. I think Villareal किए थे हमारे साथ. Yes, Sadio Mane सुपर चैट के साथ. थैंक्स इंडिकॉप, प्लीज डोंट टाइम आउट मी. अरे कौन किया भाई? साडियो माने लेजेंड. कम ऑन, यू कांट टाइम आउट लेजेंड्स मैन. सॉरी अबाउट दैट इफ दैट हैपेंड, बट अगेन आई एम होपिंग आप लोग सब को अच्छा लगा जो भी हम बात किए, बट लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस अभी भी आ रहे. Any last words, Nidhi, for you? What do you think? What will be the difference maker tactically in this game? I think जो भी हो इस गेम में, what we have to do for sure is that we have to start fast and we have to be courageous. That is the key, I think, in this particular game. Right? Fast start, courageous. We have to make sure that Villareal don't get time to settle in, because इस तरह की teams को जब आप settle in करने का time दे देते हो, तो फिर they become very difficult to break down. We cannot have a half like we did against Everton, because इनकी defensive quality Everton से बहुत ऊपर है. So we cannot have a half like first half like that. So I think key is going to be how we set up, and which is why I said that Luis Diaz is going to be absolutely vital. We need Trent to be absolutely on point today. We need Virgil to be on absolutely point today. I agree with Nitika. I think we need those diagonal balls. So I think, and of course this is a game where Villareal will try to find that half chance and try to make those runs, which is why I think Fabinho is also important. Yeah. Good point. And again, Amarjeet, obviously, it's clear that big Mane fan in the house. Mane earns 100K. Never heard him complaining. He's one of us and wants to hear the songs at Anfield soon. Well, again, Sadio. yeah, please. Karo. So, yes, you have Kangna Ranaut. You have a great singer here. And then you get everything on the screen. Oh Thanks God. to Nitika for that.
Brilliant, अरे brilliant. अरे अरे सादियो माने का एक गाना है मेरे जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरे को किसी ने ना कमेंट किया था मेरे वीडियो के नीचे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने Yeah, yeah, सादियो माने सादियो सो वी हैव अ yeah, सॉन्ग भाई yeah, अगर ये एनफील्ड में वो लोग गा लेंगे तो वी आर रेडी टू शेयर इट बट देन वी हैव अ सॉन्ग फॉर देम फॉर yeah, सादियो माने exactly. Okay. Oh, is it Nikhil? Great, man. I am going to be at Wow. Anfield today Okay. to वाओ watch the match. Nice. Great, great. Enjoy, man. It's going to be one of ऑल an द experience पॉजिटिव for sure. वाइब्स टू यू Brilliant, brilliant. The one thing that was put to bed yesterday was a goalkeeper debate between Allison and Edison. हाँ तो सादिक भाई आप बोलना चाह रहे हैं कि यार basically speaking, as in of course, when you have Allison who can kind of make less mistakes, and again I know Mendy is not there. I would like to put Mendy in the conversation. He had a bad run of form, but I think all of these are good goalkeepers. Sadik bhai, I would say like again, Courtois in a sense has kind of saved Real Madrid's season. Edison has been very good, but yeah, he's not been tested enough. So Sadiq Bhai has a point. But I don't know. I know I'm asking Liverpool fans, but what do you think, Nidhi, about this goalkeeper chat? Like, where are you on this with the Brazil situation? भाई आप मतलब हमसे मैं मेरे से पूछोगे तो मैं एलिसन ही बोलूंगा. आई फील Exactly. एलिसन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ वन ऑन वंस. ही इज बेटर इन टर्म्स ऑफ आई पर्सनली थिंक दैट दे आर वेरी कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. बट आई थिंक एलिसन का मुझे ऐसा लगता है कि स्लाइटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर है. एंड ऑब्वियसली एलिसन कैन स्कोर. सो Yes, yes, that's a Arey, good I'll one. tell you, when it comes to Ellison and Edison, I think if there is one thing about Ellison, हम हाई लाइन खेल पाते हैं एलिसन की वजह से यार. हम हमारा जो एक गेम प्ले है वो हमारे गोलकीपर को मद्देनजर रखते हुए है कि वी नो व्हेन इट्स वन ऑन वन विद एलिसन बेकर वो है हमको बचा लेगा. एंड ट्रस्ट मी ऐसे सिचुएशंस इतनी बार आए हैं चाहे ऑफसाइड हो जाए बट मेरा दिल ऐसा हो जाता था कि भाई गोल है गोल है. एंड आई डोंट नो वो किस तरीके से ऐसा बॉडी कर के सेव कर देता है. सो ट्रस्ट मी दैट ही एंड इज यार एलिसन ब्रिलियंट. का कॉन्फिडेंस इज अलग लेवल. इफ यू रिमेंबर द लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड गेम, उसने ब्रूनो फर्नांडिस को टर्न किया था मैच के स्टार्ट में और स्कोर ओ 0-0 था. या सो या वो आई रिमेंबर दैट. द कॉन्फिडेंस एलिसन हैज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. Yeah, absolutely. But yeah, as in carriers, I think मैंने और निधि ने बात किया था, right? Remember, Nidhi, we picked that 11 where were not great fit for Liverpool in the recent squad, and भाई carriers kind of came in the conversation. भाई कैरियर्स के बारे में मैं क्या बोलूंगा. मतलब मेरा लिवरपूल का जो पहला मैच मैंने इन पर्सन देखा था, इट वाज द 2018 चैंपियंस लीग फाइनल. तो मतलब कैरियर्स के साथ तो काफ़ी पेनफुल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. तो यार कैरियर्स यार पता है वो उतना बुरा कीपर भी नहीं था. बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कुछ गलतियां आपसे इस लेवल पे हो जाती है ना कि वहां से फिर एंड देन ही केम बैक. एंड आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ मेंटल बैटल विद कैरियर्स. ही कुड नेवर रिकवर फ्रॉम इट मेंटली. उसके बाद वो टर्की गया, वहां पे ही डिडंट गेट वेजेस एंड ऑल दैट. तो आई फील बैड फॉर हिम. ऑब्वियसली ही वाज नॉट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ऐसा कुछ नहीं था. बट he was much better than how his career has so far turned out to be. I still hope he finds a good club and plays regularly and some confidence gets back. Yeah, yeah, and I think David is out. David talks football. हमने बात की थी recently. Remember about this game which is coming up. So yeah, we've been speaking about it, David. Do check out the stream अगर आपने miss किया है. Lot of things that we discussed. भाई जो एनफील्ड आ रहा है मेरे से मिलके जाना, सेल्फी खींचेंगे. आई एम टेलिंग यू मैनिफेस्टेशन हो तो ऐसी हो भाई. द गाय हैज टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू सादियो माने. Exactly. Allison has 50-50 ratio of both Courtois and Edison. Courtois and Edison are 90-10 on their strength. Interesting. Yes, ये राहुल यार ये है stat. 644 votes, but only 232 likes. Like करो यार. ये I think नितिका से ना ये बहुत नाइंसाफी है. Talking about Bollywood and singing, बहुत नाइंसाफी है तो proper नहीं. यार सिर्फ मैं बॉलीवुड फैन नहीं हो सकती. आई थिंक एवरीबॉडी इज यार. ऐसा मतलब I'm a big one. आई एम अ Yeah, बिग for sure. बॉलीवुड फैन. Yeah, for sure. He's really working hard to get into the team. He is building up good. I hope he finds a good club. Okay, here, whom are we talking about? Probably Carriers, I'm assuming.
लेकिन हाँ, I actually एडिसन thought कि किसके बारे में बात हो रही है एकदम से कि did I like phase out of the नहीं, हम बात discussion? ही What कर रहे just थे ना, वी happened? जस्ट टॉकिंग अबाउट कैरियर। सो Yeah. एडिसन ने कल सिटी को हरवाने पूरा ट्राई किया था, लेकिन मैड्रिड का कल मूड नहीं था यार। मतलब वो एक टैक्टिक है, हम बात कर चुके हैं, मे बी दैट इज एज एन अगेन जस्ट फॉर बैंटर। क्वाड्रुपल कमिंग, सो देयर आर स्टिल पीपल एक्चुअली बिलीविंग कि क्वाड्रुपल इज कमिंग अगेन। ऑल द बेस्ट इज व्हाट आई कैन से। कल आपने कहा तो मेरे मैन सिटी जीत गई, अरे यार हाँ मुझे याद है, मैंने प्रेडिक्ट किया था। थैंक यू, सेकंड लेग में भी यही बोल देना यार। मिस्टर फिनोमिनल हर एक चीज में मुझे बोलते हैं, हर एक चीज में बोलता हूँ, और मेरा प्रेडिक्शन एक चीज होता है और मैं चाहता हूँ वो अलग टीम है, राइट? तो प्रेडिक्शन यस केम राइट, बाकी चीज यू नो इट लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, लेकिन हाँ लेट्स नॉट गो देयर। लेकिन ओके, व्हाट डू यू think Liverpool need right now? Seems like a perfect squad from outside. What players should they go for? Liverpool are very picky for who they want. Yes, panel. Please I'll tell me. just mention that Avrajit is like really asking very nice questions, very good questions. मतलब मजा आ रहा Yeah, है answer करते बिल्कुल हुए. एकदम। So it's seriously. यस यस। तो वेल वहां पर नितिका ने वेल लेफ्ट कर दिया क्वेश्चन को, लेकिन हाँ एब्सोल्युटली कमेंडेबल क्वेश्चन। आई निधि, थिंक आई थिंक मतलब अगर आप प्लेयर्स की बात कर रहे हो तो आई थिंक ट्रेंट का बैकअप इज एब्सोल्युटली ये इम्पोर्टेंट। क्या, Wow. ये आज कहाँ तो से आ गया? पूरा बॉलीवुड डिस्कशन हुआ है यहाँ पे सही में. मैं हाँ, अरे आई निखिल थिंक भाई, आई मतलब ऐसा थिंक मत किया करो, ट्रेंट निखिल knows, you know, we have a lot of chat on the cricket channel as well. Anyway, please Nidhi continue. Yeah, no, I'm saying Trent ka backup. I think we should get one. That is one thing. Abhi, but knowing us, it will be probably somebody from the academy. Hmm. Bradley, या फिर Neco Williams can come back from loan, or maybe he can be that, Yeah. or Gomez for that matter, when he is not playing centre back. तो but वो मुझे एक एरिया लगता है कि we should have somebody. But again, it depends on who leaves as well, right? I mean, Hmm. समर में ट्रांसफर्स में फुटबॉल में कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल है, तो देखते हैं. Yeah. I Again, also think that we yeah, yeah. back up for Fabinho as well, kahin na kahin, because he has been like playing a lot, and I don't know why. अभी चुआमेनी के साथ भी talks चल रहे थे ना, and I want to yeah exact, and I got very excited and I thought नहीं नहीं नहीं, let's not think about it, because you know what, जब हो जाएगा then we'll talk about it. But then having Chouameni will be really really good, you know, because he can play as a number 6 also and as a number 8. तो you know वो जो एक एक इस तरीके का बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर रहेगा ना, एंड स्पेशली द डिफेंसिव ड्यूटीज दैट वी नीड फ्रॉम अ प्लेयर, एंड एक बैकअप लगा लो चाहे. आई वुड लाइक टू हैव चुआमेनी, इवन दो जूड बेलिंगम के साथ भी टॉक्स है, टॉक्स सबके साथ. लिवरपूल इज लिंक्ड विद एवरीवन आउट देयर, एवरीवन. बट obviously we know the scouting and जिस तरीके का चलता है, but yes definitely Trent and Fabinho का हमको बैकअप का काफी जरूरत है मिडिल में. या हाँ मतलब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साथी भाई बोल रहे हैं अबाउट यू नो गेटिंग अ वेटरन, which is not the Liverpool way, I know. लेकिन for with Miller they did it in the past and he has kind of worked for Liverpool, नहीं निधि? यार देखो, वेटरन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, द वे फुटबॉल इज नो, यू वट एवर वेटरन्स यू हैव नो, you'll have to pay them really high, एंड वो हम करेंगे नहीं. आई थिंक एफएसजी का पूरा मॉडल ही यही है कि एटलीस्ट सेकेंडरी पोजीशंस में यू कीप प्लेयर्स दैट आर यंग, टैलेंटेड, एंड इफ दे डोंट वर्क आउट यू कैन एटलीस्ट सेल देम ऑफ, right? Which is what you saw with Simicas, and that worked out. So although not that I'm hoping you, I would obviously not want that, but that is FSG's plan. So veteran के Yeah. chances, I understand that concept, but I think chances बहुत कम है कि कोई veteran आएगा as a backup. मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है ऑफ राहुल टेलिंग इट। ब्रिलियंट। बॉलीवुड आज है अपना टॉपिक मेन वही लग रहा है, लेकिन गब्बर पूछ रहा है कितने आदमी थे सांबा 662 सरकार, और गब्बर बोल रहा है और लाइक सिर्फ 240, कम ऑन लाइक लेट्स गेट द लाइक्स अप। और हम या स्ट्रीम एंड ही करने वाले हैं, एंड अगेन आई हैव गॉटन माय यू नो प्रेडिक्शंस इन ऑलरेडी। Hopefully, like again, it'll be a great match. मैं तो मतलब I'm just hoping for a great match, and yeah. By the way, we are doing obviously कल यूरोपा लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग भी है, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्लेइंग चेल्सी, so we are doing a stream tomorrow which will be at same समय रखते हैं. Everyone chat, I hope that's okay with you. We'll keep it at 8:30 and please do join, and of course everyone in the chat, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है to all our channels, links are in the description below, please do it. And yeah, last words, Nitika, anything that you would like to share?
बस आज का मैच अच्छा हो जाए। आई एम जस्ट होपिंग अबाउट दैट एंड अभी थोड़ा नर्वसनेस होना शुरू हो गया है। मतलब मैं पहले बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि ठीक है, लेकिन जैसे-जैसे वो नहीं होता कि एग्ज़ाम की घड़ी आ रही है, तो तब तक मेरे को बेचैनी होने लग जाती है। सो आई एम जस्ट स्केयर्ड अबाउट दैट एंड आई होप आई हैव अ गुड मैच। बट ट्रस्ट मी द कमेंट सेक्शन वाज़ रियली फन टुडे, मज़ा आया। Yeah, पता yeah, नहीं लगा कि absolutely. इतना Without टाइम हो without गया। these guys, या yeah, अपना content आएगा ही नहीं, and that is what या these guys are the main people जो करते हैं content, and that's या brilliant. And yeah, talking about basically, as in nervousness, Nitika, she sounds like someone. मेरे सब फ्रेंड बोलते थे नहीं यार कुछ नहीं पढ़ा देखा तो मार्क्स है तो टॉपर निकला. That is what Nitika sounds like literally. Again, Liverpool, yeah, come on, you are favorites, but it's never over till it's over, right? And that's also a fact. हुँ। We need to accept that. Nidhi, to end, maybe you would like to touch upon this Salah contract situation. Any news? There's nothing new from what I have read. What it अभी लेटेस्ट जो 442 में साला ने इंटरव्यू दिया था वो यही है कि it is not just about money. From what I have read, what Salah has said that we will, of course the money thing is there, but we will also try to extend Klopp's contract, which is Mhm. what Salah has been apparently demanding. तो वो Yeah. तो मुझे नहीं लगता है कि that is a problem in terms of FSG not wanting that. Obviously FSG will want Klopp to extend. अब वो तो हुँ। क्लॉप के ऊपर है कि वो करता है कि नहीं. दिस इज अज्यूमिंग दिस थिंग इज ट्रू. तो um, वही है यार. मतलब आई जस्ट देयर इज नथिंग न्यू फ्रॉम व्हाट आई नो. Yeah, absolutely. कोई नहीं तो anyway, people again see you in the watch along. Like I said earlier, we are doing Baba's channel and we'll be back tomorrow. We are live and yes, Rahul said let's get to 250 likes before we end. And again, I'm hoping everyone has subscribed to Almighty Blues FC, Almighty Blues Cricket, but more importantly, Indie Cop and Menace to the Monk. And wish you all the best, Nitika and Nidhi. Thanks for coming on. थैंक यू। Hamesha brilliant to chat with you guys. And again, everyone in the chat, special shout out to the people who do super chats. And of course the mods. काफी मेहनत लगती है mods. I know. Shout out here, Rahul, Rajesh. Lot of them. I know I'm missing a lot of names, but I'll come back tomorrow. So हम कल भी मिल रहे हैं. Till next time, take care. And just looking forward, maybe a great football game and hopefully some drama as well. मैं तो चाहूँगा. Yeah. ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन। बाय.